computer. So I have started this recording. I will share the recordings with you. So no need to worry. No need to worry about the recording. I will share. So with me, there is my team from Learnings Foundation who has also joined with me. And in the coming series, they are going to take some sessions. We have some RMOCs from Chennai. We have some teachers from Jammu and Kashmir who are going to take different sessions on different technologies. सो टीचर मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं मेरे फाउंडेशन से जो आने वाले इन दिनों में लाइक जैसे कल से वो कुछ ट्रेनिंग्स भी लेंगे आपके साथ. हमारे साथ कुछ RMOCs हैं जो चेन्नई तमिलनाडु से है. कुछ मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं जो कश्मीर से हैं. वो सेशंस लेंगे और आशा करता हूँ कि आपको सेशंस समझ में. एक सेकंड में जरा म्यूट कर देता हूँ. टीचर रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज आप म्यूट हो जाइए. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको म्यूट करूँ. सो कई बार हम लोग अनोइंगली सर कई बार हम लोग मॉर्निंग सर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. हमने पिछली बार भी आपको अपना इशू बोला था कि हमारा जो ये जो अटल टिंकरिंग लैब है ये उन 10,000 के लिस्ट में नहीं फॉल कर रहा है जी जी एक्चुअली। जी आपका आपका मैं समझ सकता हूँ. आप सर ऐसे कीजिएगा. आप मुझे एक बार अपना जो इशू है आप मुझे पर्सनली मेल या व्हाट्सएप पे ड्रॉप कीजिएगा. मैं उसको देखता हूँ कि सर आपका आप जो आपका हम्म, मेल आईडी मिल सकता है सर मुझे? जी 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 मैं शेयर करता हूँ. मैं शेयर करता हूँ. ओके सर। ठीक है. मैं आपसे आपका डेफिनेटली मैं ये लूंगा क्वेश्चन. सो टीचर गुड मॉर्निंग. राइट नाउ टू 300 teachers has joined. तो मैं ये समझूंगा these are the 300 schools, right? So around 2 minutes before it was 200, now 300. So still teachers are joining. Let's wait for 2 to 3 couple of minutes. Meanwhile, my colleague has shared one attendance link for third day for today. So I request you all please mark your attendance for today. The link is same. The feedback link is also same. You can mark your attendance quickly. जब तक हमारे बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपने अटेंडेंस मार्क कर लीजिए. So around 355 teachers has joined right now. Will take 2 or more minutes. Meanwhile, I request all the teachers please mark your attendance quickly. If you have marked your attendance, just write. Uh, just write. Let's do a small activity. I'm opening the chat for everyone. So just for this activity, let's for a quick activity to just know each other. We'll do in a quick introduction of ourselves. Like my name, I have joined from which school and which state. ठीक है. So टीचर जब तक हमारे टीचर्स अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं तब तक हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे. लाइक मैं मेरा डेजिनेशन मेरा स्कूल और मैं किस स्टेट से मैंने ज्वाइन किया है ताकि आपको भी पता चल सकेगा कि आज हमारे साथ जो ये
370 टीचर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और जो नंबर अभी बढ़ रहे हैं, ये किस किस स्टेट से हैं, क्या पता आपके नियर बाय स्टेट से कोई आपको आपका कलीग मिले। जैसे कल मुझे इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे ही शहर से एक इंचार्ज मिले जिनको शायद मैं नहीं जानता था, बट तो मुझे उनसे मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ कि अच्छा ये मेरे ही साथ के इंचार्ज है जो मेरे ही प्लेस से हार्डली 10-15 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। तो हो सकता है शायद आपको भी कोई ऐसे टीचर्स मिल जाए, ऐसे इंचार्ज मिले जो शायद आपके नियर बाय एटीएल इंचार्ज हो, और आप शायद अगर आपका कनेक्ट हो आपस में तो आप आगे और भी कोलैबोरेशन में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने अपने चैट पे अपने जो लिंक दिया हुआ है मेरे कलीग गोकुल साय ने, आपने उसके अटेंडेंस मार्क कर लिया होगा। अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं ये अटेंडेंस मार्क हर आधे घंटे में हम शेयर करेंगे अटेंडेंस फीडबैक। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अटेंडेंस नहीं फिल किया तो प्लीज उसको फिल कीजिएगा, ताकि हम आपके ऑन बेसिस ऑफ अटेंडेंस हम आपको आपका सर्टिफिकेट और आपको जो आपके अदर रिसोर्सेज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, लिंक्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सके ओवर द मेल। सो मैं ये चैट ओपन कर रहा हूँ और ये एक्टिविटी हम जस्ट फॉर 5 मिनट्स वी विल डू। सो आप यू कैन राइट इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच, द चैट इज ओपन। अब आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं और बाकी टीचर्स भी अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से हमारे साथ इंचार्ज हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ टीचर हैं, ज्वाइन किया है। देन पोदार इंटरनेशनल स्कूल से पोदार इंटरनेशनल स्कूल जलगांव, आई थिंक महाराष्ट्र से हैं राकेश सर। देन हमारे साथ अटेंडेंस लिंक, ओके, कर्नाटका से असिस्टेंट टीचर हैं अश्विनी जी, जिन्होंने जो हुआ ज्वाइंट। देन शिमला से वी हैव हितेश शर्मा, वाओ। सो वी हैव टीचर फ्रॉम शिमला हिल स्टेशन ऑल्सो वी हैव, ओके, एसवीएम विकास नगर। We have teacher again, Sri Devi from ATL Mentor. She is from Cochin Refinery School, Kerala. Then Balod, Krishna Mishra is from Balod district. Then Sutagadi School, Karnataka. And then we have Anuj Bala from Khas. Okay, बहुत सारे teachers have joined today. Allah Purushottam Pujar from Karnataka, Hosali. Vikas Verma is there. Then STEM Innovation Engineer from Kothari International School, Noida, that I heard the school name. Then there are a lot of names are coming. Chandrakanta Daima Jalna. Okay, I heard about Jalna. Hisar से APS हिसार से हमारे साथ शुभम सर हैं, शुभम फ्रॉम देवी दीपा टोली रांची। ओके, आई थिंक वी मेट यस्टरडे। जिनसे हमारे साथ गोपाल यादव, गोपाल से हैं, यादव मंदिर, विद्या मंदिर सीनियर हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिन। हैदराबाद तेलंगाना से वी हैव कुणाल। हिमाचल प्रदेश से है हमारे साथ विकास नगर एसकेएम स्कूल से हितेश शर्मा, ओके। देन KVFS संजय श्रीवास्तव एटेल इंचार्ज, ओके। देन अनुज बिश्नोई है हमारे साथ में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। वी हैव होसकोट कर्नाटका, मोनिशा टीचर, स्वामी विवेकानंद। Then from Pune, Vaishali Vige from the Pune. And Madhya Pradesh also is there. Vikas Bawasar from Government Boys High Secondary School and District Barwani. Chhattisgarh, we have the teacher. We have a teacher from Bidar. Okay, then GB Nagar, I think it's in Karnataka, I guess. MC Gopichandra College. Oh, Gautam Buddha Nagar, sorry. MC, okay. Then Hyderabad, Tukaram. Then we have Prakash Panwar from Chamoli. Namaskar, sir. So we have from Chamoli, we have Jyoti Mutt. Mike, and I see Jyoti Mutt. Okay. So Uttarakhand also, I see the first one person who has joined from Uttarakhand. Then Odisha, okay, Sundargarh. Great. Chandan Satpathy, sir, from Odisha. Vishakhapatnam. B. Narendra Reddy, sir, is from Vishakhapatnam. Great. So a lot of teachers has joined from Sudarshan sir, Satish from Ludhiana. Then we have Sopor, Mudassir Makbul from Gulzar Memorial School. Great. I heard this school name, Gulzar Memorial. From Coimbatore, Tamil Nadu, we have Karthik B. Great. Good morning, Kerala, Koduvali.
Kudos, Bhanu sir. If I'm not wrong, I'm pronouncing it right. Vadodara, Gujarat, we have Umang sir. Chhattisgarh, we have Rakesh sir. Assam, oh, we have teacher from Assam also. Marigaon district. Robert High School, Hazaribagh. Then we have Pulwama, so we have Sajad Ahmed Kumar from Pulwama, Jammu and Kashmir. Manik from Greater Noida. We have Pudukkottai, Tamil Nadu. There's a school, Mount Zion International. Great. So I think a lot of teachers have joined from Dharamshala, Himachal, DNO, Belagavi, Karnataka. Then we have Lansar Convent School, Andhra Pradesh, PBGT. Then a lot of teachers who have joined from some news. Okay. Rumi ma'am from Faridabad, Tamil Nadu, Rajasthan se we have Madan Yadav sir. Okay, Bihar we have Uday Mishra ji who has joined us from Bihar. Great. Nasik, Wak- Wakar Makbul Lone sir from Jammu and Kashmir who has joined with us. Jubilee Hills from Hyderabad. Jharkhand we have Kadma High School, DBMS Kadma High School. A lot of teachers who has joined from different states, different districts. Bagura, West Bengal. Also, we have great. So, Kamlesh Singh from Bhimtal, Uttarakhand, sir, from Maharashtra. Okay, so a lot of teachers who has joined Haryana. Great. So, teachers, I hope now you can see there's a lot of teachers who has joined from different, you know, part of the India right now. So it's not like we are focusing on one state. Actually, it's a training, teachers training for all the teachers. Right. If you can see here, there's a person who Mr. Hirojit Singh. He's a leader in charge from Impahal, Manipur. So Northeast teachers are also here. Not only North Kashmir, but teachers from Northeast also joined over here. If I say Tamil Nadu, Odisha, people teachers from there also joined this training. Right. So thank you so much. Thank you so much, sir, for joining today's session. So I think a lot of teachers have shared their attendance and their location from where they have joined. I think it's a great thing that we all are to come together and you know attending this session together. So there are around more than more than 175 teachers are here who has joined. Let me stop this chat. I think we are good to go with the training. So right now, let me see around 459 teachers has joined. I think it's a good number we have. So we have some people who has joined from Nagaland. Some people are there who has joined from Karnataka, Raichur or Hosur, different districts. Some people who has joined from Baramulla, Sopor, Bandipura, right? So a lot of team is there. Now let's move to our session. Let's discuss about today's session. So in today's session, we are going to discuss some important things that will help you to begin with your ATL lab. Just let me give me a moment. I hope everyone has marked their attendance. If no, I would like to request my colleague please share the chat, share the link in the chat box. And the teachers, those who have joined just right now, please mark your attendance. Yeah. So moving ahead to our topic that is today's agenda, which is first is design thinking. Design thinking is something is something a topic which we have not heard oftenly. Sometimes we heard. So design thinking टीचर्स एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम कई बार हम नहीं सुनते या आप इसके बारे में हमें नहीं पता होता है क्या चीज है. बट डिजाइन थिंकिंग एक ऐसी अप्रोच है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा वे है जिससे आपका जो स्टूडेंट है जब वो एटीएल मैराथन में पार्टिसिपेट करता है या जब वो किसी भी कोई भी बड़े या छोटे लेवल का प्रोजेक्ट बनाता है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने की जो एक जर्नी होती है
उसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उस पूरी जर्नी को बेसिकली डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, जिसको मैं आपको एक आसान भाषा में आज मैं आपको सिखाऊंगा. सो टीचर, डिजाइन थिंकिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर व्हेन योर स्टूडेंट develops or involved to create a project or a product. So in the journey, the steps that are involved during developing a product, right? So that we are going to discuss in detail. So this process will help you and your students to understand when they're designing a prototype or a product, right? So this will help you to to at least understand from where they have to start and where they have to go. Just give an example. Let's suppose a student is there who is developing a project for a farmer, right? And his project name is, let's suppose, agriculture robot or so, right? So when he's identifying the problem, so the when he's developing a product or a project, the base means the project is revolves around a farmer. So he has to first identify the local problems, right? And then he has to identify, okay, this is the basic problem. Like it can be related to soil, it can be related to water, it can be related to agriculture, right? So first he or she have to identify the problem. Then what's the next step? The next step is to generate ideas. How can I resolve this issue? How can I what should I develop so that my project or my product resolve that kind of farmers water related or soil related issues. Then after when I developed created my idea, then what is the next step? So student doesn't know the steps. What is the first, what is second, what is the third, right? It's kind of a step by step, stages are there. So that we are going to discuss in today's call. And I hope after this call you also get an idea and you also brief your students. So I'm just sharing my screen. I need your inputs and teachers in today's call. I request all of you that I need your support in the chat box. I'll ask some questions and I'll open the chat box and I request to share to be with me and just let me share my screen. So Gokul, can you see my screen? Yeah, it's getting loaded. Okay, let me know Yes, if it's visible. visible right now. Before we move to the design thinking, I would like to request teachers. Let's have first morning click a picture with all the teachers. Then we'll begin our session. So I would like to request all of you just turn on your camera. So we'll take a good picture first, and then we'll begin. So I would like to request my teammates. I'm just giving you a co-host, and I would like to request kindly take some good photograph. Gokul is there. Then just a second, Saik. I'm making you. I'm giving you an access to click some pictures. Uh, host, Musab, please click some pictures. Co-host. Lucky, you also please here. Lucky, please help us in clicking some good photograph. Let me make a co-host. Yeah. So teachers, are you ready? Within next 2 minutes, we'll take some good photographs. So yeah, thank you. I'm changing this screen. Team request to please change the screen because a lot of teachers have joined here and take all the photographs. There are 3 4 pages where I can see hundreds of teachers who has turned on the camera. I would like to request my team to please click some good and teachers, you also take some photos so you can post it on your school Facebook page. You can post it on your school Facebook page and you can tag us. You can share me the link. So yesterday I received a link from one teacher and she shared me the link of her school Facebook page where she mentioned about this teachers training. And the school name is Children High School. I think the school is from Ajangarh, UP. So that school shared me the one link, Children High School. Yes.
So thank you, ma'am, for sharing the link where you have posted about this teachers training. And I hope this is how I expecting from other schools also. Please upload this activity as we have discussed in the last call, yesterday's call, that whatever we are doing related to active ATL, document it, post it on your Facebook page, post it on your ATL dashboard. So you will also get a chance to be one of the ATL School of the Month. Thank you so much, Children High School. So moving to our today's topic. So let me share my screen again. That is design thinking. So this question, I'll ask some questions also. I'll unmute teachers also. So first is, what is design thinking? Right. So, does anyone from the audience would like to answer about design thinking? What do you understand by design thinking? So, I'll give you an access of unmute. Please unmute so that other can hear. Yeah. So, anyone want to share like what is design thinking? जैन सर डिजाइन नमस्कार थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ नमस्कार सर आवाज आ रही है सर Yes, yes, सबकी आवाज आ रही है. Yes, yes. सर डिजाइन थिंकिंग एक्चुअली एक प्री प्लान है किसी भी आइडिया को सही तरीके से एक्यूरेट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब उसके बारे में सोचना एम्पैथाइज करना और उसको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू आगे ले जाने के लिए आई थिंक Okay. हेलो Yes, सर yes, sure. Yes. Anyone can. सर एजेंटी का यूज करते हैं Designing thinking is understanding a इंटरनेट problem deeply, you can say. Okay, one by one we'll say. Rakesh sir, I think up related to problem Hello, solving. good morning, sir. related to problem solving. Okay. Anyone else? Hello, Just sir. by name, please name first, then we'll go. I'll call your name. आप मुझे नाम बताइए, then we'll go one by one. Okay, sir. This is Deepika, sir. I am Yeah, hi, from Deepika ma'am. Pisai Model School, Telangana. Yes, sir. Yes, ma'am. Design thinking is a problem solving statement, sir. Because we are using understanding diagrams, we need to solve the problem, sir. Okay. Great. Anyone else want to try? Yes, sir. Hello. Yes, sir. सर Hello. सर Yes, yes. चंद्रकांत Yes, आई एम फ्रॉम जालना Okay, महाराष्ट्र sir. Yes, sir. डिझाईन थिंकिंग मीन्स जैसे रचनात्मक एखादी यानी हम कोई डिजाइन करते हैं रचनात्मक तो उसको समस्या यानी समस्या में लेना और उसका समाधान व्यक्त करना और लास्टली वी फाइंड द सॉल्यूशन Okay. लास्टली समाधान तक जाना ठीक Hello. Yes, yes, sir. Yes, yes, yes. Hello. Good morning, everyone. Hello. Yeah. One by one. I'll take your name one by one. Then, otherwise it will be difficult for us to go. आप अपना नाम बताइए and then we'll start. बच्चे एक बात संख्या बताओ नहीं 65 नहीं हाई स्कूल का Yes, Krishna Hello. ji. This is 11 Kamlesh plus Singh Kannan. 55 Hello. Mm-hmm. आप इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं सर लेकिन मैं Hello. तो सब Yes, पूरा sir. डिटेल लिखी तो According नहीं to कर रहा me, the design फाइनल thinking हो भी नहीं is, करा the set of 39 और 9 65 कितना है hello. Ma'am, can you, 39 और ma'am, 39 excuse me, ma'am, can you please 39 unmute yourself first? 9 Yes, sir. Good Ma'am, morning, और sir. 10th का yeah, good 65 morning. Yes, sir. Hello. बस और 11वीं का है 18 एक सेकंड मुझे लगता है शायद ऐसे नहीं हो पाएगा. Teachers, what you will do, और 12वीं का I think मुझे ऐसा लगता है कुछ टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं बट साइड में पहले अपने सब्जेक्ट्स का कुछ क्वेश्चंस भी कर रहा है सॉल्व. तो ऐसे तो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें शायद आप भी अपनी चीज शेयर नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट वी कैन डू, अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपके हैंड रेस के थ्रू वन बार एक एक करके आपको कॉल आउट करूंगा. आई विल कॉल यू वन बाय वन बस बाय सीइंग योर हैंड्स. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय टीममेट्स, द टीचर्स दोज हु हैव answered, you can change their hand to lower. I think this is the best way because I think some teachers are working parallelly. They have some school things are going on, and I know attending both the things, managing both the things, so tough. So no issues. I will understand. So I'll ask one by one, two, three teachers. You just raise your hand. Yeah. So I'll ask. One is from Rashmi Shrivastava, ma'am. I'm unmuting you. Please.
Okay, sir. So I'm Yeah. Rashmi from Jaipuria School, Kanpur. Actually, design thinking is a structured process of solving any problem with proper ideation, then prototyping, feedback, and all. And so it's a structured process, I should say. Yes, kind of, ma'am. Thank you so much. And your school, I know from Deepak Porwal is there, who I think worked with your school, Jaipuria Kanpur School. I heard about your school. Yeah, thank you so much, ma'am, for sharing. Yeah, the next we have teacher Archana Se Rai from SSV. Let me unmute. Yes. Hello, sir. Hello, ma'am. How are you? Hello, sir. How is you? Yes, yes. Audible. Yeah. सर मैं बोल रही थी कि whatever हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट है उस मुताबिक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और आइडिया उसी अनुसार खुद करेंगे. Okay. Okay. ठीक है. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your thoughts. Then we have Jinny Saha. Would you like to answer? You have raised Yes, your sir. Good morning. Good morning to everyone. Good morning. So I'm Jinisha. I'm from Navrachna Vidyani, Vadodara, Gujarat. So design thinking, I think first step is we empathize with the user. सबसे पहले उनके problem understand करके and then it is a structured way of solving a problem, analyzing the problem, understanding the problem, and then defining the idea and designing the prototype. Yeah, you are almost correct, ma'am. Yes. So we are going to discuss about this in detail with some examples also. Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. So I'll take one more person from the group. So we have I'll take some person like from R Satya Narayan Murthy. Let me unmute. Yeah, here's the name. Yes, sir. Over to you. सर डिजाइन थिंकिंग आई थिंक सर सिनारियो को समझने का सबसे बेस्ट मेथड है सर. इससे समस्या का समाधान निकलता है. ग्रेट सर. अब बिल्कुल ऑलमोस्ट आप करीब है और आप एकदम बिल्कुल सही आपने बताया कि समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं. पर थोड़ा सा हम डिजाइन थिंकिंग को आज कुछ आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे. आसान लैंग्वेज का मतलब विल अंडरस्टैंड इन सम सिंपल टर्म्स सो दैट एटलीस्ट बिकॉज व्हाट हैपेंस एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट we know the problem but we do not know how to focus or how to solve or the steps. So yeah, now I will be sharing my screen and I'm showing some slides and I would like to request teachers, please, we need your 100% focus or attendance over here. So let's first talks about design thinking and ideation. So what is design thinking and ideation? So if we talks about basic problems. So as you know, in right now ATL Marathon has been launched, and how many of you have actually seen the portal, the challenges for this year? What are the challenges by the AIM has given? आप में से कितने टीचर्स हैं जिन्होंने ATL SIM स्कूल इनोवेशन मैराथन का जो पोर्टल है वो एक बार देखा, उसमें क्या क्या साल के चैलेंजेस हैं, क्या हमें किस चैलेंज के ऊपर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, विच चैलेंज और विच प्रॉब्लम वी हैव टू वर्क ऑन, राइट? So these are they have listed some challenges, like it can be water scarcity, it can be it is related to women's safety and hygiene, then it is related to education, right? So there are that we are going to discuss in today's call, right? So to understand first the problem means in your ATL lab students are coming and they are from different backgrounds. Like for example, some are from for the farmer background, some are from business background, some are from industrial background, right? So every student have their own mindset from which background they are coming, which things they are seeing on their daily life, है ना? आप हर बच्चा जिस घर से आ रहा है वो किस बैकग्राउंड से है, कोई फार्मर बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई बिजनेस रिलेटेड बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई ऐसा बैकग्राउंड से है जिसके फादर एक इट्स अ टेक्निकल टेक्नीशियन हु इज रिपेयरिंग अ टेलीविजन. तो ऐसे बहुत हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं एंड एवरी
students have their own kind of challenges, right? Uh, so I'm just saying, for example, we have teachers or students who has joined us from Ladakh, Kashmir. They have their own challenges as per their terrain. Similarly, teachers or students who are from coastal areas, Tamil Nadu, Kerala, Odisha, those students have different kind of challenges. Or not even the student, but the community, those who are living around those students, right? A student will not say who is from Tamil Nadu or Kerala कि हमारे यहाँ तो बहुत स्नोफॉल हो रहा है, राइट? क्योंकि उनके वहाँ पे दैट क्लाइमेट इज नॉट लाइक दैट जो हमारा कश्मीर लद्दाख में होता है या नागालैंड में होता है. नॉट दैट्स क्लाइमेट इज नॉट दे आर सीइंग इन साउथ कोस्टल एरिया, राइट? एंड सिमिलरली द पर्सन हु इज फ्रॉम कश्मीर और लद्दाख और तमिल और असम, they are not like कि हमें coastal related issues like flood and this kind of issues, they're not facing on that. So every region have their some specific kind of challenges. So first thing is need to identify the actual problem, right? प्रॉब्लम ढूंढना. एक बच्चा है जो एक स्कूल आता है जाता है एंड ही सेइंग कि मेरा जो एरिया है ऐसा है कि जहाँ पे ब्रिजेस नहीं है प्रॉपर. अगर मुझे स्कूल आना है, I'm not able to commute to school because there is not a proper facility of a bridge, right? And so that is also a problem for him. And even there's a student who sees that there's a person who's not able to walk properly, who's kind of special disabilities, जो ढंग से नहीं चल पाता है, तो उसको भी एक बच्चा एक तरह से कह सकते हैं if he or she want to do something for that person, right? That is called तो बच्चों को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, let them keep open mind and ask them, motivate them कि in this marathon you have to identify the local problems, and local problem can be anything because there is an option in ATL Marathon. Last year also it was there, last time भी था, इस साल भी है कि अगर आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो अगर हमारे जो हमने डिफाइन किए हैं एटीएल मैराथन या एसआईएम की लिस्ट पे, अगर उसमें से आपका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप उसको अदर्स में करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं. यू कैन एनरोल योर प्रॉब्लम इफ इट इज नॉट लिस्टेड इन द एसआईएम का पोर्टल, राइट? सो फर्स्ट मोटिवेट और orient the students about the problems and the challenges what the surrounding people are facing, right? So first they have to think. So the first thing is what is an idea. So can anyone from the audience tell me ki what is if you want I says let's define or explain what is idea, तो आप अपने इसको लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? How you are going to explain the term idea? Anyone want to raise hand? They can, even if they want to write in the chat box, that is also fine. If I says what is idea, तो आप उसको कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? आइडिया क्या है? Okay, so I can see there are some people who are responding in the chat also. So idea is something which can solve an issue, problem solving statement. Then idea means extracting the problem, solutions for a problem. Okay, then efficiency and economically. Yes. Idea is the first click comes in a mind. Idea is the first click that comes in a mind. Okay. Thank you, ma'am. Then idea is a picture of your mind. An idea is a picture in your mind about what can be done. Okay. Okay. So there are a lot of definitions of an idea, right? Now my next question is, what is the difference between an idea, a good idea, and a great idea? I think you have heard about this many of your time. When someone gives you an idea, we say, oh, good idea, or we say a great idea. So what is the difference between a good idea and a great idea? Anyone want to try? I think in the chat box I can see, but please teachers, do not use ChatGPT or Gemini, because these are the tools which help us to work, but we are not completely depending on, because sometimes when I attend the trainings, I also use ChatGPT and parallelly finding the answer and pasting over the chat box. So let's try by
yourself, because this time is for brainstorming. We are talking about ATL Marathon, right? So the students also have to brainstorm by themselves. So let's try. What is the difference between a good idea and a great idea? Good idea can be implemented without much expensive. Okay. Good idea is the solution, and great idea is unique. Okay, yeah, that is also good. सर I think. सर गुड आइडिया तो सिंपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक सिंपल प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन। लेकिन ग्रेट आइडिया उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि एक रियल टाइम वर्किंग है, जिसकी एक रियल वैल्यू है। यस, काइंड ऑफ कह सकते हैं। ओके, मेरे पास हमारे पास बहुत सारे शायद आंसर्स चैट बॉक्स पे आ रहे हैं। आई होप आपको भी वो आंसर्स विजिबल होंगे, एंड इट्स फॉर एवरीवन। गुड आइडिया सॉल्व द प्रॉब्लम, विद ग्रेट आइडिया विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्स एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स। ओके, सो देखो, हर किसी की अपनी अपनी भाषा है, परिभाषा है, कह सकते हैं। हर कोई, सबका अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग है, राइट? सो let me come back to the presentation. Just a second. I hope my presentation is visible. Gokul, can you see my screen? Yeah, it's already. Okay, it's there. Okay, thank you. So, as we are discussing about the idea, so a thought or suggestion as to a possible course of action. So I think most of the teachers knows, and they have answered what is idea. When it suddenly comes in my mind, when we stuck somewhere, okay, how to resolve this issue, or how to, and suddenly a spark comes in the mind. Okay, this is the solution. So that is the idea. But the difference between good idea and great idea is which actually solves the problem, right? So me yeah. So how to just a second. So how to develop your product for solving the problem, why, how, and everything around it. So we are going to understand a basic thing about this one. So by observing nature, we develop fastest bullet train. So have you seen this? By through this bullet train, I think you have seen the pointed sharp nose. We have observed from the nature, from the eagle, basically, that when the bird flies, its kind of shape is there. So whenever we are developing something, we observe from the surroundings, right? Now, there are some examples of some products which are there in the market, right? So have you seen this Caesar? This company designed the Caesar inside a packet. They put the Caesar inside the packet, but they didn't know that to open this packet, they again need a Caesar. So do you think it's a good product, or like if you again need a Caesar to open the Caesar, then why the Caesar is new Caesar is required? अगर आपको इस सीजर को ओपन ही करना है और उसके लिए भी सीजर की जरूरत हो, तो आपको लगता है जो पैकिंग जिन्होंने करी, जिन्होंने डिजाइन किया इस पैकिंग का, वो बहुत अच्छा आइडिया था उनका प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने से पहले? इंस्टेड ऑफ दैट वो इस पैकिंग को कुछ उस तरह से करते हैं जिसमें ये पैकेट बिना किसी सीजर या बिना किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ओपन हो जाए। सो जब भी हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो उससे पहले हम पूरा उसको एनालाइज करें कि ये मार्केट में जाने के बाद इसका किस तरह का रिव्यू आएगा, या इसमें क्या ऐसी कमियां हो सकती हैं कि अगर हमें इस पर काम करना पड़े। तो जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो जर्नी होती है, जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, डिजाइन थिंकिंग के बारे में, कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, पहले उसके बारे में अच्छे से सोचिए, मार्केट एनालाइज कीजिए। तो ये छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं, वो हमारा, जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई व्हेन आपका जो प्रोडक्ट है, व्हेन इज गोइंग टू द मार्केट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इफ यू आर डिजाइनिंग दिस काइंड ऑफ पैकेट, and again it needs a sharp object, then what is the requirement of the Caesar? Similarly, in this pencil, you have seen that there is some extra graphite portion which is not used, and sometimes what we do, we always throw that end part. So टीचर्स, कभी आपने देखा होगा जब हमारे स्टूडेंट्स पेंसिल ऐसे यूज करते हैं, तो बेसिकली जो उनका एंड पार्ट होता है, जो ये लास्ट का पार्ट है, वो हमेशा उसको वो फेंक देते हैं, राइट? तो वो कभी यूज में नहीं आता। तो क्यों ना हम उसको इस तरह से डिजाइन करें, अपने पेंसिल को जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है हम उसको कम करें, जिससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट जो आप डिजाइन कर रहे हो मार्केट के लिए, उससे आपका मिनिमल कॉस्ट कटिंग हो, आपका जो ग्रेफाइट का जो मिनिमल यूज हो। तो दैट थिंग्स comes in our mind when we actually understand the process, right? We understand the need of the consumer, right?
So these are the things when your students developing the products or project, they are working on projects, they also identify the end goal. If I'm developing this kind of product, how actually this is going to help the customer, right? Now, these are some common designs I think you have seen on internet viral. They can design the labor person who carries heavy weight of material on their head or shoulder. This kind of solutions can help them. Similarly, a cup of tea, even this design is something different from a normal cup. You can place your biscuits over here, and then the water sink over this mineral. So these are some designs which actually people are working on the existing products. Now, have you ever find such kind of problems? A problem with charging socket due to space constraint, you are not able to use the plugs sockets properly. If there are four options, but if your charger is of different size, you're not able to use that plug. So that is a problem. And what's the solution? This is the solution, that you can rotate or you can change the direction of your sockets in 45-degree in both the directions, right? And this is how you can easily use your 100% your socket, which we call it 100% efficiency, right? So ऐसा आपने कभी देखा होगा कि आपके ऐसे, not only this example, there are a lot of examples in the market. You have seen such type of products. आपने ऐसे products भी देखे होंगे कि आपने उसको देखने के बाद कहा होगा कि इसका proper use नहीं कर सकते because इसमें ये कुछ कमी है. तो ऐसी चीजों पे rework करना and to come up with new solution, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग. एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पे, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है उस पे, या कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, थिंक लाइक दैट. Now there are some different solutions. This is the problem, but there can be multiple solutions. I'm not saying कि भाई एक ही solution है. There can be 3 versions, 1, 2, 3, and 3 versions are completely different from each other. If you see, it's in the second version is having some space, and still there are 1, 2, 3, and the fourth, the 2 is for USB. Similarly, this is something different. This is something that it depends on idea, what type of idea is coming in your mind. So as I can see right now, every teacher have their own way of explaining about what is idea, right? So similarly, जब product बनाते हैं तो हर किसी का अपना अपना खुद का idea होता है, and it's up to us कि which is one is the good idea and which is the great idea. ठीक है? So this is a perfect example of good idea and great idea. That ideas are there, but which one is a great and which one is a good, we have to understand. Now, let's understand some real world problems. So first, design thinking, as I already shared, and I think most of the teachers have already explained about what is design thinking. It's all about logics. So there are 5 steps basically. There are more than 6 and 7 steps, but we are say there are 5 steps for design thinking. So first is the empathize, right? First is empathize. Then we have define. Then next we have ideate, prototype, and test. So these are the major 5 steps that comes in design thinking. So we are going to discuss about these steps one by one, and we are going to understand one by one, like what is the actual mean of empathize, what is the actual mean of define, ideate, and prototype. So टीचर, जब डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेजर जो है 5 स्टेप्स होते हैं: empathize, define, ideate, prototype, and test. मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैं इनके मतलब नहीं बताऊंगा, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि हम जब एयरटेल मैराथन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट ओनली एयरटेल मैराथन, बट या अगर आप एयरटेल मैराथन के अलावा भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, या अपने वो डे टू डे लाइफ में कहीं भी वो किसी चीज पे काम करते हैं, तो कैसे वो डिजाइन थिंकिंग अप्रोच को अपने उसमें अपने प्रोडक्ट में या अपने लाइफ में अडॉप्ट करके कैसे उसको और इजीली कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? सो द फर्स्ट इज एम्पैथाइज. सो बाय दिस पिक्चर व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या समझ में आता है? जो मेरे सामने ये फोटो है, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पिक्चर से आपको क्या चीज समझ में आती है? लेट्स विल डू एन एक्सरसाइज, और आप यहाँ पे यू कैन यूज योर चैट, और या फिर यू कैन यूज योर रेज योर हैंड,
My colleague will make you co-host one by one, and you can answer. Even I can make you co-host one by one, and you can answer. Right. So I would like to request teachers. I'll say the name one by one. So I'll start. Just a second. So in this picture, I think you have seen all the photographs. Right? So Children High School. Hello. Just a second. Let me. Hello, good morning, sir. Good morning. Yeah, good morning. Hello. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Sir, as I observed that here it is trying to show that what the old age people are facing problems while traveling on the road or stairs. They are facing the problems, and the wheelchairs are there, but the wheelchairs is not working properly when they have to walk on the stairs or the road like that is showing here. So during the exercise, actually, we have to understand the what actual problems the societies are facing, है ना? यहाँ पे एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा कि इनको एक्चुअल समस्या क्या हो रहा है और उसको फील करना होता है। एक्सरसाइज में हम ट्राई करते हैं कि हम उसको फील करें, खुद से फील करें, सो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल एंड प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एकदम आपने सर एकदम करेक्ट कहा कि फील द प्रॉब्लम। आप जब तक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आप खुद नहीं आपको क्या वो बनाना है, उनके लिए कैसे आप हेल्प करेंगे, जब तक आप खुद से नहीं फील कर सकते तब तक आप उनकी मदद नहीं कर सकते। आपने बहुत सही ये बात कही है। एग्जैक्टली। या सो वी हैव चिल्ड्रन हाई स्कूल, आई थिंक हैव रेज्ड अ हैंड। मैम, यस। Ma'am, can you hear me? I think you can unmute yourself now. आई थिंक आप शायद यहाँ पे आपको म्यूट नहीं कर पा रहे। हमारे पास और भी टीचर्स हैं। वी हैव Anshu sir from Jindal Modern High School, Hisar. Good morning, sir. Good morning. According to me, empathy means that be emotionally connected with other's pain. What other is feeling. Until we do not connect with others' problem, we will not be able to find the solution of that problem. Yeah. Okay. Yeah, you are almost correct. Yes. So anyone want to try? We have one more. सर, can I? Yes. सर, जैसा सर ने बताया कि हमें इसके बारे में किसी भी की समस्या को हमें फील करना होता है। जैसे अब मैं ये बोलूँ कि हमें इमेजिनरी, मतलब मैं फिजिकली ना सही, हमें इमेजिनरी वहाँ पहुँचना होता है कि वो प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को वो से परेशान है, किस प्रॉब्लम से वो झेल रहे हैं। उस प्रॉब्लम को लेते हुए हमें उस का आइडिया, उसके बारे में सोचकर हमें अपना एक नया प्लान बनाना होता है। ये मेरे हिसाब से ऐसा, जैसे इसमें दिखा रहा है पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर या कोई भी उस समस्या को बता रहा है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि रास्ता हमारा टेढ़ा है, इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, तो हमें वहां जाना होगा, फिजिकली नहीं, मेंटली जाके हमें उसको देखना होगा कि कौन कौन सी समस्या से ये जो भी कैंडिडेट है वो परेशान है। सर, मेरे हिसाब से। जी, चलिए मैं इसको कवर करता हूँ। आई थिंक टीचर विल आई कम टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. So basically in this empathize stage, this is the first stage, right? Let's talk about as a student's perspective. जब आप बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स ATL मैराथन, find the challenges, problems in the community, right? So on that time, the first thing when we are so they say, बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स विल से कि सर मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, राइट? उनका जनरल चीज रहता है कि सर हमें आइडियाज नहीं जनरेट हो रहे, हम क्या बनाएं और आप हमें मदद कीजिए, यू कैन हेल्प मी, आई एम नॉट एबल टू गेटिंग लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम should I work on, right? So that is the first thing where you have to guide them, that first you have to empathize. Like example,
if you can see on the picture, there's a old person who is not able to walk properly on a road, that old person is not able to walk or climb stairs, goes ups and down, because he is having a stick. So the first thing, if you're working with certain challenges, need to explore what's around the surrounding. ठीक है. So अब एक एग्जांपल, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. देयर इज अ पर्सन जो अच्छे से नहीं वॉक कर पा रहा है, नहीं चल पा रहा है. जस्ट कीप, or a person who is not able to see the world. ठीक है. कोई ऐसा आपके पर्सन आसपास में है जो एक दुनिया को नहीं देख सकता, who can't see the world. So think yourself on his place. You keep your eyes closed for 1 hour. ठीक है. आप अपने आंख को 1 घंटा बंद करके देखिए, और देन फॉर 1 hour हाउ यू आर फीलिंग, दुनिया हमारे लिए कैसी है. आप उस 1 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन किस तरह से फील करता होगा 24 hours into 7. ठीक है. अब आप सोचो कि एक बच्चा, एक टीचर, एक पर्सन है जो जो डिसेबली नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड, और मुझे उसके लिए बनाना एक स्मार्ट ग्लास जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हो, या एआई बेस्ड कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हो जो उसकी हेल्प कर दे. ठीक है, आप बना सकते हैं. यू कैन डेवलप दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फॉर हिम और हर. बट what is the meaning of empathize? To feel, to put your foot in his shoes. भैया, जब तक आप उसकी जगह खुद से आओगे, 1 घंटे या 2 घंटे आप अपनी आईज को बिल्कुल क्लोज करके, either you are try to go from your home to your school to your office to the market, then actually you will understand कि उसको किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. राइट. द पर्सन विल से कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे सामने से कार आ रही है, आई एम नॉट एबल टू सी द कार. वो अपने जो वर्डिंग से बता रहा है, आपने वो सुने, आपने उसको नोट किया, दैट इज फाइन. बट जब तक आप खुद से वो प्रैक्टिकली खुद से नहीं करके देखोगे, वो 1 घंटे का जो मैं आपको बता रहा था कि 1 घंटे आइज क्लोज करके वो सारी एक्टिविटीज, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग. ठीक है. एक तो होता है कि उसको जो प्रॉब्लम्स उसने बताई, आपने नोट कर ली, सुन ली, दैट इज अ वन थिंग. बट द सेकंड, to understand the actual problem, be on his place and feel. उनके जो पूरा दिन का रूटीन होता है उसको खुद से ट्राई करके देखेंगे, देन वी एक्चुअली नो. सो जस्ट गिव एन एग्जांपल. दिस एम्पैथाइज. एम्पैथाइज इज बेसिकली टू पुट योर फुट ऑन हिज शूज एंड देन सी द हाउ एक्चुअली द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग. तो जब भी कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बनाता है या किसी प्रोटोटाइप पे काम करता है, तो उनको सबसे पहले हमें ये गाइड करना है कि पहले आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहले खुद उस जगह पे आओ. अगर वो वाटर से रिलेटेड है तो उस जगह पे खुद उसको अपने आसपास में उस तरह का आप इन्वायरमेंट क्रिएट करो, खुद से फील करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई. आपने देखा होगा जब कोई मूवी होती है या जब हम कोई एक्टर है कोई रोल प्ले करता है या किसी के ऊपर बायोग्राफी बनती है, तो वो खुद पहले उस चीज को बनाते हैं अपने ऊपर, खुद उस तरह से पूरा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं ताकि उनको उसको समझ में आए कि ढल जाए वो उस चीजों के अंदर. राइट. सो दैट सेम, इफ योर स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप और अ प्रोडक्ट, first he or she has to understand the actual problem by keeping himself herself on that place. ठीक है. तो in the first step, empathize. This person is noting down all the things of this person कि उसको एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. राइट. then we have few points that to be considered while interviewing. अगर आपसे बात करके पूछ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इंटरव्यू जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ना. सो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सम फ्यू थिंग्स लाइक द इंटरव्यूअर मस्ट ब्रेनस्टॉर्म फॉर द क्वेश्चंस बिफोरहैंड एंड मस्ट बी fully prepared for the interview. For example, if you are developing you are solving some problem, so brainstorm before asking the questions. आपको सब चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए ताकि आप माइन्यूट से माइन्यूट चीजें उस टाइम पे जाके आप उनसे पूछे जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है. देन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड must be open questions. No such question should be asked from which the interviewer can ask, oh, okay, only yes or no. The question should not be like yes or no. It should be an open questions, right? Then interviewer must have plenty of why questions when about the problem he is going to start. Then the second stage is define the problem. So defining the problem is basically when you understand, okay, this is the problem we have identified. Now, how many other people are also facing the same problem?
It might be a single person problem, it might be a community problem, it might be a problem for some special people. So define the problem, how many other people are also facing the same type of things, right? So this is, define your problem. Then the third is ideate. So as we are as we talked about idea, there it can be different types of ideas. तो जब आप बात करते हैं प्रॉब्लम की, तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम के साथ मल्टीपल आइडियाज आते हैं. व्हेन अ प्रॉब्लम इज देयर, then there are multiple ideas will come in your mind. We need to understand which one is the best idea and which is the good idea, which is the great idea. Because see, in your third step, if you see, this person designed this structure, structure for this person. So it can be this. The idea is like, if you are helping a person who is not able to walk properly, तो उसके लिए जब आप कुछ डिजाइन कर रहे हो तो बहुत तरह के आइडिया आपके दिमाग में आएंगे. लाइक हम इस तरह का डिजाइन भी कर सकते हैं, हम ये स्केटिंग बोर्ड जैसा भी डिजाइन कर सकते थे, है ना. बिकॉज एज वी सेड कि भैया आइडिया आप कुछ भी आ सकता है, बट आपको उस पर देखना पड़ेगा कि विच इज द ग्रेट वन, विच इज द गुड आइडिया. देन जो भी आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, सबसे पहले होता है हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज, मतलब पेपर प्रोटोटाइपिंग. मतलब जब भी आप कोई आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो, उसको पहले पेपर पे हम डिजाइन करके देखते हैं. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हमने प्रॉब्लम ढूंढा, उसका सॉल्यूशन बनाया और सीधा हम लग गए उसको बनाने में. नो, बिफोर दैट देयर शुड बी अ पेपर प्रोटोटाइपिंग. पेपर पे हम उसका पूरा स्केच बनाते हैं, पूरा उसका कैलकुलेशन करते हैं. सो इट्स अ इट्स अ डीप थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. So a paper prototyping होता है. पेपर में भी you will come up with the multiple ideas, and you need to understand which one is the good, and you have to reject others, है ना, जब आप कुछ चीज बना रहे हैं. So if you can see, भाई we can design such kind of skate. So do you think it's an idea? ठीक है, it will help, but do you think this will be good for the person who's not able to walk properly? So that you need to understand कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो हम इसको आगे जिसमें हम काम कर सकते हैं, राइट. सर ये जब हमारा ये आइडिया स्टेज आता है, देन वी कम टू द एंड, द पर्सन हु इज एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम, कि दिस इज व्हाट आई एम डेवलपिंग फॉर यू, डू यू थिंक दिस विल हेल्प यू? सो जस्ट टेक what we say is कि उनसे भी आप सलाह मशवरा, टेक ओपिनियन कि if I'm designing this for you, what you think, will this help you your problem? So if you're not asking the first person, मतलब जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, आप उनसे नहीं पूछेंगे, आप खुद बना देंगे. And when you at your final stage, आप है ना, आप फाइनल स्टेज पे आ गए, and then you coming that final product to that person, and he will say no, this is not help me. So to avoid such cases, ask and keep the person in loop every time whatever you are designing, right? So the stage, ideate stage. So these are the ideate stages when you're working on the product. So these are some idea stages. It's basically divided to 4 categories. Design thinker should bring as many ideas. While brainstorming ideas, it is not checked whether the idea is feasible, not variable. So when you're working with the product, so it will comes in your mind कि भाई ये जो product है ये काम करेगा, कारीगर होगा, नहीं होगा, right? So there are some things. So now let's move to the next step, that is prototype stage. So prototype stage is where when you comes from the paper to the actual hardware. You have done many calculations on your paper, you have designed, you have done many sketching, how this prototype is actually looks like, what is the height of this prototype, what is the width, how much weight it can sustain, then which material should I use. So these are some things that we have to do in the paper. Then when we design thousands of when we come up with thousands of designs on the paper, then we have to come up with one solution. So that prototype is over here. So now you see example here. This person has carry a structure, iron structure, base, and this is something different. The purpose is same, just to उनको मदद करना और चलने में, but design is something different. ये काफी space ले रहा है, and this is space compact. इसमें space बहुत कम है. Similarly, अब when you're designing a prototype, you need to understand कि आप किस purpose के लिए लेके जा रहे हैं. हम इस इतने बड़े structure को हर जगह use नहीं कर सकते, but this is easy to carry. You can use on any surface, on a small surface, but this is not able to. So keeping such things in mind, when you design something, उसका पर्पस क्या, वो हर जगह यूज होगा, कॉम्पैक्ट है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें हमेशा डिजाइन अपने माइंड में रखनी होती हैं जब हम कोई चीज डिजाइन करते हैं, राइट.
So this is what we call prototype stage, coming from paper to the actual on ground. Then there are some guidelines also for prototyping. So take the first step and start build the prototype. Don't procrastinate. Then don't waste too much on time on building a single prototype. Sometimes happens. आपने अपने lab में भी देखा होगा. You have seen in your lab when the students preparing for marathon and the 3 months, 4 months is being over, and still students are working on a single prototype, and if they do not know the solution, still they are taking time. So instead of that, do not take much time on a single prototype. If you think this is not working, come up with a next solution. अगर आपको लगता है कि भाई एक प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लग रहा है बट कोई आउटकम नहीं आ रहा, मैं एलईडीज कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं सेंसर्स लगा रहा हूँ बट मेरा सेंसर काम ही नहीं कर रहा है, मैं आर्डिनो यूज कर रहा हूँ या मैं कोई बोर्ड यूज कर रहा हूँ, बैटरी यूज कर रहा हूँ बट वो काम नहीं कर रही, हम उसी के पीछे लगे हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट, try to come some with some different solution, right? Might be it will not working, might be voltage बहुत ज्यादा है और हमारा जो components का करंट उसका कैपेसिटी बहुत कम है जिसको हमें नहीं पता. So try to do with different alternates, but not spend much time on a single design or prototype. Then the third is the prototype must be built up with end user in mind. So always whatever you are designing, you have to keep the end user in your mind कि आप जिसके लिए बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट बना रहे हैं और ये नहीं पता कि उसका एक्चुअल जो हम बना रहे हैं वो क्या लास्ट में उसको एक्चुअली हेल्प करेगा. क्या अगर मैं कोई जैसे अपने लास्ट फोटो में देखा था, लास्ट पिक्चर में, लास्ट स्लाइड में, वी हैव सीन टू डिजाइन, दिस वन एंड दिस वन. सो वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड, if I'm designing this prototype, will he be able to walk or climb the stairs by using this structure? So this always you have to keep in mind whenever you're working on some project or prototype. Always keep the end user. जब भी टीचर्स आप अपने प्रोजेक्ट पे या बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमेशा एंड यूजर के बारे में ध्यान रखना कि हमें जो चीज बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये उसको हेल्प कर भी पाएगी या हम नहीं कर पाएगी. ऐसा नहीं हो हमने पूरा टाइम लगाया और बाद में उसके काम भी नहीं आ रही है और हमारा पूरा जो टाइम था वो वेस्ट गया. ठीक है. देन द फोर्थ इज द प्रोटोटाइप मस्ट नॉट बी मेयर पीस ऑफ ट्रैश. It must create an experience for the user, right? And the last one is think of open questions that can user can shoot towards when you, yeah. So always be ready with the questions, because अगर आप किसी के लिए solution बना रहे हैं, if you are creating a solution for someone, be ready with the questions. They can ask you any question about the prototype कि भाई how this will work. अगर इसमें ज्यादा वेट अगर लगते हैं, for example, if my weight is 70 kg and will this structure able to handle my weight, right? So these are some, because you have to clear with your things you have used. Like suppose अगर आपके you have used which material for this product. ठीक है. So be always ready for the open questions. Then once prototype is developed, next steps. आपका जब प्रोडक्ट आपका जब प्रोटोटाइप अगर बन जाता है, उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं. So take the end user through the prototype and let him or experience it completely. So I hope it's clear. When you are working, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका जो एंड यूजर है उनको उस प्रोटोटाइप पे साथ में रखें और उनको बार बार टेस्ट करवाएं, जिससे वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बता पाए कि जब वो अगर वॉक कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो प्रॉपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. ऐसी कुछ चीजें जो आप काम करते जाते हैं, साथ साथ उनके फीडबैक्स, हमसे कह सकते हैं कि फीडबैक्स भी लेते रहिए कि हाँ एक्चुअली आप किसी के अगर लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में उनको किस तरह से हेल्प कर रहा है, क्या वो एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो किसको कैसे उसको बेटर बनाए. ठीक है. देन नेक्स्ट इज throughout the experience, make the use speak about the moment by moment expression, and this will help you to design thinker to capture the minute details of the experience. Okay. So try to actively observe and just engage with user driving the experience. And the last one, okay. So these are some points basically. I'm not going to read out these one by one. So ये कुछ points है teachers. जब भी आपका कोई prototype या product होता है तो हमेशा आपको end user पे keep in mind कि हम जो बना रहे हैं उनका actual में उनको problem solve कर भी रहा है या नहीं. Then this is the stage which we called test stage. So test stage क्या होता है, जैसे कि आप जब आप एक प्रोडक्ट बना दिया है, आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने जिसके लिए बनाया है हमें वो भी ध्यान में रखना होगा कि क्या एक्चुअल में उनकी
ये प्रोडक्ट जो हमने डिजाइन किया है ये उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको हम टेस्ट स्टेज बोलते हैं। और यहाँ से हमारे कुछ की फीचर्स हमारे सामने आएंगे, जैसे कि इन्होंने जब इनको डिजाइन किया तो उनके एक्सपीरियंस को लेना कि जो व्हील्स हैं बहुत फास्टली मूव तो नहीं कर रहे, या जो हाइट है कुछ कम तो नहीं है ना। जब आप देखो उनकी हाइट बहुत कम है एंड ही हैज टू गो डाउन, उनको झुकना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जब जिसको हम टेस्ट स्टेज में मेजर करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है दैट्स फाइन, और आपको लगता है कि बिल्कुल रेडी है, यू कैन रेडी टू गिव इट टू द पर्सन हु इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ इसमें चैलेंजेस हैं, जैसे हाइट कम है या जो हैंडल है बहुत छोटा है उसको नहीं पकड़ पा रहे, ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, यू नीड टू चेंज द रबर, यू नीड टू चेंज द व्हील्स साइज, यू नीड टू चेंज द बेस ऑफ द व्हील, बिकॉज कई बार क्या होता है कम बेस वाले जो होते हैं वो जल्दी से इधर उधर गिर जाते हैं, तो उसका बेस बढ़ाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे टेस्टिंग फेज में काम आती हैं। ठीक है, टेस्टिंग फेज में काम आने के बाद क्या है, हम उसको नोट डाउन करते हैं, एंड अगर आपका प्रोडक्ट टेस्ट में पास हो गया देन इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट पास देन आपको फिर से आपको पिछले स्टेप पे आना पड़ेगा और आपको फिर से स्कोप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट स्टेजेस के कुछ पॉइंटर्स हैं जो एक्चुअली में ठीक है मैम, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। नाउ जैसे आपको बताया था, ये पूरा जो फेज आपने देखा अभी, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, एंड देन इट्स अगेन गोज इन द टेस्ट फेज, मतलब फीडबैक। अगर इफ इट्स पास देन फाइन, इफ इट्स नॉट देन द स्टूडेंट हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये हमारा पूरा थिंकिंग प्रोसेस है। अब मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। सो एम्पैथाइज इज बेसिकली फ्रॉम वेयर यू गेट द प्रॉब्लम, आपको वहां से प्रॉब्लम मिला, आपको प्रॉब्लम मिलने के बाद आपके पास अलग अलग माइंड्स में आइडिया आए। ये जो आप डिजाइन, ये जो आप ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ग्राफ, तो आप जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, पहले ये दोनों बढ़ रही हैं लाइंस, मतलब एक्सपेंड हो रही हैं, फिर एक पॉइंट पे आके डिक्रीज हो रही हैं, फिर इंक्रीज हो रही हैं, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब समझते हैं, एम्पैथाइज मतलब जहां पे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन मल्टीपल सॉल्यूशंस कम्स इन योर माइंड, सो मल्टीपल सॉल्यूशन मीन्स इट इंक्रीजेस, एंड एट अ पॉइंट जहां से आपने उसको डिफाइन किया, मतलब जब प्रॉब्लम्स आई, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो ये ग्राफ हमारा बढ़ा। उसके बाद हमने उसको डिफाइन किया। डिफाइन का मतलब ये एक्चुअल जो एक प्रॉब्लम है ये ऐसे किस किस लोगों को आ रही है, तो हमने उसको कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्जिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने बोला मुझे वॉकिंग में प्रॉब्लम है, दूसरे ने बोला मुझे स्टेयर्स में प्रॉब्लम है, थर्ड ने बोला आई एम नॉट एबल टू सी, तो मैं वॉक नहीं कर पाता। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स जब आई, ये हुई एम्पैथाइज के अंदर। और कन्वर्ज का मतलब ये हुआ डिफाइन के अंदर कि हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स कॉमन किस किस की हैं, हम इसको कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं, मतलब एक बड़े से छोटे में, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी कि कन्वर्जिंग मीन्स हाँ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आई अंडरस्टैंड नाउ, हाउ कैन आई कन्वर्ज, हाउ कैन आई इनकॉर्पोरेट ईच अदर, लाइक किसी को डिसेबल है, चलने में प्रॉब्लम है, किसी को वॉकिंग में, तो मैं इन सब के लिए क्या एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जिसमें सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएं, तो दैट इज डिफाइनिंग। एंड देन again it is diverging. Diverging means ideas. Now obviously आपके mind में you will get 100 of ideas, 500 of ideas or 1000 of ideas, so many ideas are coming in your mind, then again it goes in the diverge form, and after diverging we work toward a prototype. Prototype means you have to identify which one is the best idea out of 100 ideas, 1000 ideas। ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 आइडियाज हैं, आप उसमें से बेस्ट 50 को पहले आप एड्रेस करोगे, देन बेस्ट 50 में बेस्ट 20, बेस्ट 5 एंड बेस्ट 1, so that comes under converging, so that comes towards prototype। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो ये इटरेटिव फेज है, कन्वर्स डाइवर्स चलता है। जब आपके माइंड में अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, आपने उसके अलग अलग सॉल्यूशंस निकाले, सॉल्यूशंस के बाद आपने उसका प्रोटोटाइप बनाया, तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा चल रहा है। और देन एट द एंड इट विल गोज टू टेस्टिंग एंड फीडबैक फॉर्म। अगर टेस्टिंग फीडबैक फॉर्म में इट इज पास देन ओके, इफ इट्स नॉट देन अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग अगेन ऑन आवर प्रोटोटाइप। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग प्रोसेस। So this is how it goes from starting to end, and there are some tasks. Oh, so this is all about design thinking process. I hope it's clear, but मैंने इसको बड़े short term में समझाया है, and I think आपको you will understand this complete process when a student is working from on a prototype, how to start and how to end. Yes. So, teachers, just over to you. Just give me a second. I'm going to unmute you.
And I would like to request, if you have anything to share or you understand, please let me know. If you have any doubt till now, अगर आप उसमें कुछ नहीं समझ में आया, you are not able to understand some point, please let me know so I can clear it right now. Or you can unmute yourself one by one if it's required. If it's not required, I request please do not unmute because there's a lot of disturbance comes at the end. Yeah. So ये हमारा पूरा process है of design thinking का. I hope this is clear, right? So you can show me a thumbs up either in the camera or in the chat. So I'll go ahead. So right now we have lots of thumbs ups coming. If you have any doubt, you can ask right now. Thank you so much, teachers, for. Sorry. Great. I think this is clear. Everyone has raised their hand. Thank you. Thank you so much. Yes, anyone want to ask anything, or should we move ahead to the next one? So, meanwhile, I'll just see 12:15. So, Gokul, please share the attendance link with the teachers, those who have joined right now. So, teacher, I'm Hello. just. Hello. Good afternoon, sir. Sir, one small doubt, sir. Yes, sir. So, this design thinking for every project when we implement, actually, students like face difficulty in going directly to the users. For example, farmer any problem they are trying to solve. So they feel it difficult to go directly to the user. So in that cases, like what other options they can do? So, see, as you have mentioned that students are not feeling good directly met with the farmer. So, what I suggest as a teacher, as a guide, someone can be with them, and at least they can, even they can, teacher can guide them, and even on internet, if we search, there are a lot of problems that are there, right? They can directly, if there's a problem related to farmer, there are a lot of problems. But yes, I suggest to met Yeah, that and is what actually. actually they are doing right now. Yeah, but I That is what suggest. they're actually doing right now. Yeah. Yeah, so I suggest need to mentor them because when they visit the ground actually, and they understand the challenges, because obviously their idea is something, जब वो उस पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स उनका है, तो they should be there on front foot, उनसे मिलना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, because internet is something, वहां पे you will get n number of problems, but actually वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, उनको वो चीज समझनी पड़ेगी, और उनको खुद से, तो what I suggest कि as a guide, as a mentor, someone with them, because they are new, who is not directly अभी मतलब लोगों से नहीं मिलना, they are small kids, so might be as some senior person will guide them, or is as a mediator who can help them to in between the farmer and that I suggest. That is up to Correct, you, correct, sir. correct. Yes, yes, yes. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you. Sir. Good afternoon, ma'am. Sir, I am Swati from Pune. Sir, for example, if there are two group of students, group A, group B, both come up with one idea and a good solution to both the ideas. But one group gives us idea for a smaller population, and the group with the idea solution of which will be helpful to the larger population. In such case, which idea should be selected for competition? So Both as ideas are ma'am. equally good, but the customer base is smaller for one idea than the other idea with respect to the problem solution. Okay, so ma'am, as you mentioned that the problem is the solution is both are same, but one is for the smaller group and one is for bigger group. Okay, okay. So what I suggest, if it's for bigger group, you need to check the feasibility of the product, like the scalability. If I says, will it be able to reach at that level? For example, I developed a solution, right, and I know for a smaller group I'm able to access because उसमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, it's a local community,
you can directly reach out to the people. आप अगर अपना product लेके जा रहे हैं, you also get a feedback from them easily. But at the same time, the same set of students, are they able to reach that community on a large scale? अगर उनको feedbacks भी चाहिए, is there any way like or a platform, right? So first start with local. What I'll start with local, take their inputs, working with a first time on a product. I think if you have seen on the market also, when a new company start, they choose first, they try their experiment with some people, take their inputs, then they again recorrect, or what we say इसको ठीक करना दोबारा, then go to the large audience. Instead of that कि हम large audience तक गए, पूरा effort लगाए, and then we are not able to उतने सारे changes करना, तो we lost a lot of things. So try from the low crowd or low community, जहाँ पे कम लोग हैं, आपको अच्छा feedback मिल जाएगा, अपना product आप उसको और refine करेंगे, and then when you actually feel कि okay, now this is ready for a big level, then go at the vast, because obviously it's easy to reach to the lower level as compared to the bigger one, right? Thank you, sir. Yes, ma'am. Thank you. Then we have Archana. I think Archana ma'am is okay. Yes, ma'am. You want to say something? Yes, sir. सर एक्चुअली बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है रिलेटेड टू क्वेश्चंस, तो सबका वर्कआउट सबका प्रॉब्लम सॉल्व करके उसी का यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कौन सा ठीक है, कौन सा गुड होगा, वो कैसे जानेंगे? तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा अच्छा नहीं है, उसके लिए एज अ मेंटर फर्स्ट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो किस पर्पस के लिए बन रहा है, राइट? अगर हमें जब तक पर्पस ही नहीं पता होगा और हम प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि जो हमें प्रोटोटाइप बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब किसके लिए आप ये डेवलप कर रहे हैं। देन नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके, इफ दिस इज द पर्सन हु फॉर whom वी आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट, हम इनके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना, तो एज अ मेंटर यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? तो एंड यूजर हमेशा हमें ध्यान में रखना है। ऐसा अभी अभी हमने स्लाइड में भी देखा कि जब तक हमें हमारा एंड यूजर ही नहीं पता होगा और हम कुछ भी बनाए जा रहे हैं, है ना, तो कीप ऑलवेज इन माइंड कि हम ये किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। वो हमेशा अगर फोकस हमारा पता है तो आप इजीली उसको आप यू कैन आइडेंटिफाई विच वन इज अ गुड वन एंड विच इज नॉट द राइट वन। यस, थैंक यू मैम। नेक्स्ट आई थिंक who want to ask next? Then we have 12:30. We have a break, and then we'll come up with the ATL Marathon. Yes, Rakesh, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yes, yes, clear and loud. Yes, sir. Thank you. So, whatever problems the students are bringing do we need the problems to be just like sensor based, or they can come up with some software problems? They can be solutions through softwares. That is my question to you. Or it should be some electrical things only into this ATL. No. So see, it's not about ATL ki if we are working with ATL Marathon or if we are participating in ATL Marathon and the complete things are from ATL. No, it can be from anything. Basically, what we are trying to achieve is we need students who finds solutions of the problems, right? And they can use any material. It's not like you have to use only P1, P2 ka electronics and art and craft. If they think that something is out of the box, बाहर से जाके भी कुछ अगर करते हैं solution, that is also open, because ATL Marathon is for ATL school and non-ATL schools also. Non-ATL schools also can participate by using their UDIS code, and some of non-ATL schools, doesn't have such kind of equipments in their lab, but still they are participating because they are using the technology. They are actually working on the solve problems. Yes, so it's open, right? It's not a constant कि हमें इसी पे ही रुकना है, आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। Solution can be made through any of the sources, whatever they. Yes, hardware, software, anything. Okay. Thanks. Yes, thank you. So I think we have yes,
some hands has been raised by Sir Chandan Satpathy. Good morning, Yes. sir. Good morning. Sir, my question is that many of the times the students comes with the ideas, but those ideas are very basic and they are not unique. And when I tell them that your idea is already it is there in the YouTube or it is very basic, you have to think somewhat more advanced, then they are helpless. Yeah, right. I know because it's all about brainstorming. अभी जो हमारा सेशन हुआ, this is all about to identify the problems, right? So as a mentor, it's our responsibility to guide them because they are the kids. They have not explored the world, right? उन्होंने वो एक दुनिया नहीं देखी. If they are, at certain, they are from a colony or a village or from some location, वो जितना उन्होंने देखा उनको उतना ही पता है. So now we have to mentor them, we have to orient them. This is, for example, water problem, right? उनको नहीं पता कि भाई राजस्थान में या किसी और स्टेट में ड्राफ्ट सूखा है या सिटीज में भी पानी नहीं आ रहा है. व्हाट वाज द रीजन? तो वी हैव टू गाइड देम कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है. चीजें उनको है ना. ओरिएंटेशन के अंदर इज बेसिकली द एटीएल ऐप. वी हैव टू टेल, शो सम वीडियोस. When we watch the video, then they actually come to know, oh, this is a problem. Okay, this is the solution can be. तो वहां से उनको समझ में आएगा. Okay, now I have to work on this product. So as a ATL mentor, as a teacher, we need to guide them about the problems. Like in our daily class, we told them about SDGs, Sustainable Development Goals. There are some, problems, international, basically related to environment, climate change, food, water scarcity. So we have to orient them. सो टीचर, बेसिकली मैं ये एक जनरल क्वेश्चन है जो सभी के साथ होता है कि बच्चों को आइडियाज नहीं आते कि प्रोजेक्ट बनाए किसके ऊपर. तो क्योंकि उन्होंने वो अभी उतना नहीं देखा है अपने आसपास के गांव में, विलेजेस में, कि वो जिधर से वो आए हैं उनको वो जितना वो दायरा है, मतलब जहां वो रहे हैं, उन्हीं को उन्हीं ही प्रॉब्लम्स के बारे में पता है. तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके साथ ओरिएंटेशन क्लासेस में उनको बताएं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. जैसे अभी आपने रिसेंट देखा होगा जो अभी क्लाउड बर्स्ट की वजह से इतना फ्लड है पंजाब, हिमाचल और ना उत्तराखंड. तो उनमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं. तो जब वो व्हेन दे वॉच द टीवी, जब वो टीवी पे देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नाउ दे कम अप विद सॉल्यूशन कि इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. तो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू ब्रिंग. जस्ट अ सेकंड, समवन्स माइक इज ऑन म्यूट. Yeah. So it's our responsibility to, help them with the problems, and then they will come up with solution. और उसका solution हम अपने लैब में एक छोटे स्केल पे हम कर सकते हैं. Obviously जब आपका एक प्रोजेक्ट आपका अगर ATL मैराथन में सिलेक्ट होता है, and then you will get a chance to bring it to the bigger scale, but at least start with the lower scale, right? So I think we have done with this one. I think no one has raised the hand. If anyone want to, you can unmute yourself and you can ask your question. Then we will begin. Hello, sir. Hello. Hello. Hello, sir. Can you guide us? I've just checked with this ATL Marathon. I've just registered as a teacher guide. Can you help me out, further steps? How can I register our students? Yes. So, ma'am, this is our next topic, ATL Marathon SIP, so Student Innovator Program. So we are School Innovation Marathon. Sorry, School Innovation Marathon. So here we are going to understand about the complete step by step how to register students on ATL Marathon for ATL Marathon. तो टीचर्स, मैं यही रिपीट कर रहा था कि अभी हमारा अभी ब्रेक के बाद एक सेशन होगा, वो ATL मैराथन के ऊपर ही होगा. कैसे ATL मैराथन के बारे में हम समझेंगे, इस बार मैराथन की कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, क्या इस बार के टॉपिक्स हैं, और मैं आपको उससे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देने वाला हूँ जिसमें आप बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं और कैसे आप बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं. हर बच्चा अपना कोर्स भी कंप्लीट करेगा अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने से पहले. तो इन्हीं के बारे में हम इस बार समझने वाले हैं. तो हम एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे 12:30 पे. 12:40 पे हम फिर से वापस आएंगे और उसके बाद हम अपना ATL मैराथन में प्रोजेक्ट्स कैसे सबमिट करने हैं, कैसे यूट्यूब पे सबमिट करना, और मैं आपको आज एक सेशन लेने वाला हूँ कि आप वीडियो कैसे शूट करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है वीडियो शूट करना. बिकॉज प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे बन रहे हैं बट उसको प्रॉपरली हम अपलोड नहीं कर पा रहे हमारे पोर्टल पे, या हम नहीं प्रॉपर दे पाते, हम अपलोड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे जो मेन फीचर्स है हमारे प्रोजेक्ट की वो
कई बार रह जाते हैं। मतलब जो आपका जज है, जो जजेस है, जो बैक एंड पे प्रोजेक्ट्स को चेक मतलब देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है, मतलब टीचर खुद कहता है कि ऐसा प्रोजेक्ट गूगल पे नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, बट मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। देखिए रीजन क्या है वो हम उसके बारे में जानेंगे, ताकि इस बार आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आप पार्टिसिपेट करें, मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप अपलोड करें, और ज्यादा चांस हो कि आप उसमें टॉपर में आप रहें, टॉप 1000 के लिस्ट में रहें, और आप एक SIP SCP के अंदर रहें, जिससे कई बार स्कूल्स को फंड में मिलता है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे और काम कीजिए। और ठीक है, तो वो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। इट्स अ ब्रेक फॉर 15 minutes, and then I'll start with two things: SIM School Innovation Marathon, and how to shoot a video for ATL Marathon. And then I'll take some previous session that I missed, like GEM. Also, I'll cover after this. So yeah, please be with us because it is one of the most important session that I think will help you, and you can pass this with your students also. So thank you, teachers. We'll get back soon. And मैं वाइल एक पोस्ट भी दिखाऊंगा जो एक हमारे टीचर ने पोस्ट किया था कल फेसबुक पे। आई वांट टू शो विद यू, जिससे आप लोग नेक्स्ट टाइम this will help you. Yeah. So we'll take a break. If you want, you can stay over here. But I hope everyone has marked your attendance. Gokul or Sai, please share the attendance form and feedback form in the chat. Yes, thank you, teachers. Hello, sir. Yeah, hello, ma'am. May I add, sir? Actually, I am Nivedita from Bright School CBSE Unit Vadodara. Sir, here my students are they are giving a brainstorming. They are giving good ideas. But when they have started with the project, they stuck up with the coding. Coding in C programming or Python, and I'm not well versed with coding. So, what should I do, sir, in that case? Ma'am, so it's great. So I know not only you, but most of the teachers, they are not from IT background or technical background, right? They didn't know coding. So what I suggest, there are some tools like softwares from which you can, like example के लिए, I'll give you an example. There's a tool, Tinkercad, right? There's an option for drag and drop because they are basically there are some blocks. It's a block based coding where you have Yeah, to block. attach block by block, and it will generate the programming for you. This is the one method. Because why I'm not saying Chat GPT. I think most of the teachers were expecting that I'll say Chat GPT, use Chat GPT. Why I'm not Yeah. saying Chat GPT? Because Chat GPT is something you write and it will give a complete programming which you are not able to understand how it works. ठीक है, वो आपको दे देगा बना के, but आप समझ नहीं पाएंगे. So use block based coding. At least you and your students will understand the logic behind that. When I put a block this one, okay, this is the meaning of this. When I block this one, because it's converting English to code programming Yes, language. A block is basically an English language. It's converting into code. So that's what I recommend to use this one. So by this, students at least start learning the coding. ChatGPT is easy to do, but if you want to actually learn, then use this one. Okay, sir. Thank you so much. Yes, thank you. Sir, excuse me. Yes. Sir. So which app is that? Tinkercad. Tinkercad. I'll tomorrow my colleague will be there. He's going to tell you how to use this Tinkercad from basic. So we will be CAD, covering sir. this Tinker TINCER Tomorrow we will have a session on Tinkercad, from where you will also learn how to make programming from block based. Yes, yes. So, See, ma'am. in the Tinkercad, limited components only is there. Yes, there are limited There components. no node MCU. Yeah, ma'am, because the company actually they have put basic components, which is easy to use. Node MCU something bigger. So that case, I recommend you. There are a lot of not a website, but there are a lot of videos by which they can learn about Node MCU and they can do a practical. So just to start up to learn, they can refer, because if the student doesn't know the coding part, then they can use Tinkercad. But when they know programming and all, then they directly work on a hardware part, that is Node MCU. Node MCU is something, a next level thing. To start up, if we do not know anything, we can use Tinkercad.
हेलो सर। हाँ हेलो मैम। सर क्या हम टिंकर कैड से 3D प्रिंटर का यूज कर सकते हैं? हाँ मैम, हम कर सकते हैं टिंकर कैड से 3D प्रिंटर का। एक्चुअली हमारा एक सेशन भी है अभी परसों, जिसमें हम टिंकर कैड पे 3D डिजाइन बनाएंगे और 3D प्रिंटर यूज करेंगे। ओके सर, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर पोस्टिंग द पोस्ट, आई वाज कॉलिंग यू। आपका आई थिंक आया था, सो मैं वही सभी टीचर्स को यस दिखाने सर। वाला हूँ। मैं सभी टीचर्स को वही पोस्ट दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें वो पोस्ट अपना स्कूल के फेसबुक पेज पे करना है, जिससे हमारे आसपास जितने भी कम्युनिटी हैं या जितने भी हमारे साथ एसोसिएटेड स्कूल्स हैं या ना, वो भी देख सकेंगे कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि कल आपके पोस्ट से मैंने शायद आपकी और भी एक्टिविटीज देखी थी, आपके स्कूल में क्या क्या हो रही हैं। तो दिस इज द वे। यस सर। यस, तो दिस इज द वे यू कैन पोस्ट ऑल द थिंग्स। आप एक्टिविटीज होती है टैग अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ऑल्सो, ताकि आपका स्कूल एक्टिव रहे। सो डैशबोर्ड पे भी सिमिलर चीजें भी आप पोस्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। सो Hello, टीचर्स good ब्रेक afternoon, sir. टाइम। गुड आफ्टरनून। Sir, this is Tansu Mishra from Bhopal, Bihar. Sir, I want to know, since I am currently joining the ATL as a supporting teacher, so it is mandatory to have science background or IT background. My first question is this, and the second question is from where I get the detailed working of the equipment used in ATL, sir. First, I'll definitely. So as a new teacher, I already on the day one I took a session on complete ATL portal, right? So I request you just watch that video. I have explained everything, the teacher manual resource, the content, everything is there, right, on IMS portal. So you can get the download of worksheets, step by step, grade wise content is also there. And ma'am, what's your sorry, due to network, I'm unable to heard your first question, that you're from a non-tech background, right? And what was your question? I think you are on mute. Sorry, I think we lost. Ma'am is not there. So teachers, I would like to request, please take a break, and then we will be joining back soon, and I'll take your doubts right now. Okay, after this call, after this break, I'll take the doubts. I request, please. Yeah, thank you.
Hello, teachers. Welcome back again. 4:30 teachers has joined right now. Let me come back again. So we will be. I hope you all are now ready to our new exciting session, that is ATL Marathon, and I'll guide you completely over here. कैसे इस बार हमें participate करना है ATL Marathon में, और बहुत कुछ जानेंगे आज हम. यहाँ पे मैं काफी टीचर्स, मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मैं शायद लास्ट ईयर भी मैंने सेशन लिया था और इस ईयर भी वो अटेंड कर रहे हैं. ग्रेट. और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने और भी टीचर्स को इनवाइट कीजिए ताकि उनको थोड़ा सा लैब के बारे में पता चले, और वो आपके साथ आपके एटीएल लैब को और अच्छे से फंक्शनल करने में आपकी हेल्प करें. और जी. ये जो एटीएल मैराथन है, बेसिकली ये हमारे एटीएल टीचर ही नहीं, इसमें हमारे जो अदर साइंस की टीचर्स हैं, फिजिक्स टीचर, कंप्यूटर टीचर हैं, या हमारे जो और टीचर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ये हर किसी के लिए है. तो कभी अगर हम ऐसा सोचे कि नहीं एटीएल मैराथन बट एटीएल स्कूल्स के लिए ही बना है, या एटीएल के ही, मतलब ये मैंने चीज देखी है कि ग्राउंड पे होता है कि आई एम फ्रॉम अ फिजिक्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अ म्यूजिक बैकग्राउंड. सो एटीएल मैराथन इज बेसिकली फॉर एटीएल. नो, ये एक आपको प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप अपने रेगुलर जो आप सब्जेक्ट्स हैं, आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी आप इन एटीएल मैराथन की हेल्प से आप एक नेशनल लेवल कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और हो सकता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, क्या पता वो आइडियाज एटीएल मैराथन की हेल्प से वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में एक दुनिया बदल सके, एक मार्केट में एक जगह ले सके, जिससे शायद ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में उन चीजों की जरूरत है, ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे वो डेली लाइफ में वो जूझ रहे हैं या फेस कर रहे हैं. मैं यही कहना चाहूंगा कि एज ए एटीएल इंचार्ज आप अपने स्कूल में, अपने अदर टीचर्स, अपने कम्युनिटी, आप सबको बताइए कि अगर उनके पास कुछ आइडियाज हैं, वो आइडिया अगर पेपर पे ही है, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना आइडिया सबमिट कीजिए. मे भी हो सकता है शायद वो आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाए और शायद वो एक नेशनल लेवल पे जा करके किसी बड़ी कंपनी के जो कहते हैं इंजीनियर्स हैं या मैनेजर्स हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं, शायद आपको गाइड कर रहे हो किसी दिन. और शायद वो बच्चे जो आज एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं आइडियाज के साथ, शायद वो एक इंडस्ट्रियल लेवल लोगों के साथ काम करें, इंडस्ट्रियल जो हमारे पर्सन हैं उनके साथ वो काम करें. और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम Learning Foundation, and here the Dell company also support students, those who selected in ATL Marathon. And from the last 5 years, I'm working with a program. We called it Shepreneur program, जिसको हम शी कोड बोलते हैं, या शी, पहले वो शी कोड था, then वो Shepreneur हुआ, जहाँ पे हम स्पेशली गर्ल चाइल्ड को टॉप, जो हमारे मैराथन की टॉप 100 गर्ल टीम्स हैं या 100 टॉप 30 गर्ल्स टीम्स हैं, उनको डेल कंपनी की तरफ से बूट कैंप मिलता है, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, एंड देन उनको पूरे 7 डेज या 5 डेज या 10 डेज या पूरा मेंटरशिप दी जाती है, जिसके थ्रू उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट्स जिससे वो पार्टिसिपेट किए थे मैराथन में, जो सिलेक्ट हुए थे, उसको प्रोडक्ट से प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एक बच्चों को मेंटरशिप की जाती है. दैट्स अ शीप इन योर प्रोग्राम that is available. So, and I know a lot of students who actually work on the ground, right? तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको अलग अलग फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है, और अलग अलग कंपनी सपोर्ट कर रही है बच्चों को और उनको मेंटर कर रही है. सो मेन ऑब्जेक्टिव यही है मैराथन का कि जो आप रियल प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, उसको पेपर ही नहीं, पेपर से लेके एक्चुअल प्रोटोटाइप तक, प्रोडक्ट तक हम लेके जाएं. एंड एक बहुत बड़ी जर्नी है. हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर से, अगर आप में से भी हमारे कोई ऐसे टीचर हैं जो एसआईपी या एसईपी में सिलेक्ट हुए हैं, आपके बच्चे एसआईपी स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम में या स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में अगर हैं, तो यू कैन कम अप और आप अपने कुछ अपने जर्नी को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जिससे एक हमारे जो अदर टीचर्स हैं उनको भी एक एक गाइडेंस मिले, एक एक काइंड ऑफ
vision कि भैया actually this marathon is actually helpful for the students. So just you just raise your hand if you think that if you are here and your students are and even you were part of SIP or SEP through AIM, your students got a position somewhere in marathon and then they got a chance to part of definitely. So sir, one so over I'll call out the names one by one. You just share your school name, your location and your journey. So आप quickly दो से 2.5 मिनट के अंदर अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा so that other teachers also get a motivation about this SIP event and they will also motivate their students to for this. So first of all, sir, I think you have joined with the name of Acer. Yeah, yes, sir. I think you are on mute. I request my team to please just a second. I think you're on mute. Let me unmute you. Yes, just a second. Team, please unmute. Sir, you can unmute yourself. आपका आवाज low है. Yes, now it's audible. Again, you have muted. आपने म्यूट कर लिया है. आपका माइक म्यूट पे है सर. Gokul, can you hear? No, he is not audible. Okay. Sir, you're not audible. Your voice is not coming. Okay. I think it's taking time. Sir, your voice is not audible. We will go with Anshu Banga. Sir, your voice is not audible. We'll get back to you again. Anshu Banga, can you share some? Can you share your Yes, sir. journey? Yes. Yes, good. Gokul, can you put on spotlight? Sir, I'm not able to on my camera. Okay, no problem. Yes, ma'am. So some technical issue is there. No Sir, issues, no issues. Actually, sir, last year project was selected in ATL Marathon under 1,000 teams and we got 108th position. That was related to water generator. The name of the project was Next Gen. And this project was for the solo travelers, those who travel and they didn't find any shop nearby, and then they just made a product with the help of which water is generated with the help of moisture available in the environment. Okay, great. So, ma'am, But you the are from thing is, which? Continue, please continue. yeah, I'm from OP Jindal Modern School, Hisar, Haryana state. And the problem is that the students who made this project was from these two were from 12th class, and now they have just because started their college journey, and now they are not willing to just take this project to the next level. Okay, got it. Sir, I have one more question related to ATL Marathon this year. Actually, I have just registered my school for this ATL Marathon. And do I need to register from scratch or I need to just add the same previous ID which I got that used to start from SIM SIM? No. This year, you can this year you can check, you can try because this is something new. You can try if it's opening, that's fine. Because this time again, the teacher have to create an ID, have to register students, they have to complete a course, right? Okay. Yes. Sir, can you help me out? Actually, whenever we need some resources in ATL lab and we want to order, so can you just tell me the few vendors, authorized vendors from where I can get the quotation? Ma'am, no comments on this thing because I'm not working financially. I'm not able to working financially. You can check with whatever like for whom with you are working previous. Okay. No, means Because I just wanted to ask, no, it is that's fine. available on AIM It's website or something like that. Jam. You can check on Jam portal. You can check now. Thank you, sir. Yeah. Okay. So next is we have ATL Lab. Can you please unmute yourself? I know the name from which location. Hi. From Ansar English School, Peripla, Trishur, Kerala.
Oh, Trishur, Kerala. Okay, great, Yes. great, great. So So we would you got an like to? opportunity last year to be in Delhi. We were selected the Shepreneur program. Oh, you were there in the Sheepreneur program I was Yeah. talking about. Okay, can you Yes. please share the journey with the whole teachers over here? Yeah. It was very nice actually. All the things in Dell and everything. There was three girls with us. They actually finished school. They are actually doing engineering now. It was before year. I mean, like 2023 and Okay. 24. So they had a great time. And along with that, that year we got four selections. Oh, great. Along with the sheep runner five. And after that, we were selected into top 100 also. Okay. And we made it made in 3D. That one program was there Uh, as an extension for this. I mean, like for the SCP program, they gave us made in 3D program. okay. Good to hear. Good to hear you. Thank you so much, ma'am, for sharing your journey or the Sheepreneur. And I think this will be a good start of today's session. Thank you so much to Okay, thank join you us so from much. Trishul. Yeah. Yeah. Anyone want to share about the journey, even in the marathon? Let me, Gokul, yeah. I think here, Krishna Mishra, Jimmy Shah is also there with us. Ma'am, you would like to share? Sure, sir. This is Jinisha. I'm from Nagarjuna Vidyani, Vadodara, Gujarat. So one of our girls' team, they made it to top 500 and they were able to take the Shepreneur boot camp. They had a training program with Intel for 4 or 5 days. It was online program and it was a great program for them to understand about entrepreneurship, how to convert their prototype into a product, launch in the market. So it was a wonderful program. And after that, they have worked on creating their prototype as well. And it was about creating a sustainable band-aid. So we did take it forward, and we are working on making the prototype right now. One more project from our school got selected in the School Innovation Marathon last year, and we received a grant of 1.5 lakhs to Wow. make the prototype. And we were selected to present the project at the NEP Day celebration this year. Oh, great, great, great. And it's That good to program. hear. Thank you so much for sharing Yeah, your, so and it's good to hear that a lot of teachers who has joined and who are part of Sheepner program, and they have joined teachers yeah, training. Thank you so much and for we your actually valuable. had 87 students participated from our school in the ATL Marathon last year. Nice, And nice, nice. uh, it was a great learning experience. And we really, our students really look forward to this program. Like we have already registered and they have already taken the design thinking program and certificate also by this time. They're working on their ideas now. So Okay, okay. it's a All the great best. program. All the best, Thank you. and Thank you thank you so so much. much. Thank you. Yeah. So, Thank you, sir. yes. So next, I think we have already. It's time is going on. So sir, you want to say something? Then we'll move to the topic. Okay, this is the last one. Then we'll be moving towards our topic. Yes. यस स्कूल इनोवेशन मैराथन लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर टू टीम का सिलेक्ट हुआ था जिसमें एक स्मार्ट गॉगल्स बनाया था जो अंधे व्यक्तियों के लिए बनाया था और साथ में एक हेड हर्ट स्वास्थ्य के लिए हार्ट बीट के लिए एक आईआर बीट पे बनाया था जिसमें स्कूल मैराथन लास्ट ईयर में दो टीमों का हमारे यहाँ से स्कूल से सिलेक्शन हुआ था साथ ही में इंस्पायर अवार्ड में अभी स्मार्ट गॉगल्स का एक चयन हुआ था जो कोई भी व्यक्ति पहन के जब उसको नींद की झपकी आ जाए या नींद आ जाए तो वो अलार्म के साथ उसमें एक पांच अभी वाहन चालक के ऊपर गिरेगा ताकि वो तुरंत नींद से जग जाए फिर भी अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि वो अ, जगने में असमर्थ हो तो गाड़ी गियर मोड में बंद हो जाएगी जो कि साइड इंडिकेटर पीछे से ऑन रहेंगे जो पीछे से जो भी वाहन आएंगे तो उसे टकराएंगे नहीं
तो ये हमारे दो बेस्ट आइडिया सिलेक्शन हुआ है, साथ में इंस्पायर अवार्ड में भी सिलेक्शन हुआ। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। समथिंग बहुत अच्छा आपकी यहाँ पे आपने जिस तरह से बताया अपन लैब को लेके और टिंकरिंग का मैराथन का। आपके ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट दिस ईयर ऑल्सो। और मैं आशा करूंगा डेफिनेटली आई विल प्रे कि इस बार दिस टाइम ऑल्सो यू गेट अ चांस टू बी देयर इन द टॉप। या सो ए सर, आई डू नॉट नो नेम्स अगेन सर, आई थिंक वी लेफ्ट। सर आप अभी आपकी आवाज मैं स्टिल नहीं सुन पा रहा हूँ। I'm not able to hear you. I think there's some technical glitch. So no problem, sir. I'll get back to you. आपकी आवाज नहीं आ रही हमें in our video. So we are going to understand about the first is ATL Marathon. So let me share my screen. Just a second. Gokul, just meanwhile you share the attendance and all. There are some teachers, those who are not able to fill the attendance. And yes, ATL Marathon, I'm just opening. Yeah, so I will share one PDF I have. I'll share this PDF. This is a booklet basically, and this booklet is will help you in this for this season. तो टीचर मैं एक मेरे पास एक बुकलेट है, मतलब एक पीडीएफ है जिसको मैं शेयर करने वाला हूँ। और पैरेलली मैं एक लिंक भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ चैट बॉक्स पे। ये एटीएल स्कूल इनोवेशन मैराथन जिसका नाम है, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। एक यूजर गाइड भी है मेरे पास। और अगर आप फर्स्ट टाइम है आपका एटीएल मैराथन में, या आप ऑलरेडी पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं कई बार, तो just let me open this. I'll share my screen, and also I will be sharing I will be dropping this in the chat box. So please download or you copy the link. Otherwise, this link will goes up, and then you will not be able to find. Unable to send file. Okay, let me try again. Why is this showing restriction to me? Okay, just a second. Okay, let me paste the link. I think the link is missed. I missed this link. So this is schoolinnovationmarathon.org. Let me copy this one. Okay, can you see my screen? No. No, not yet. So wait. I'm sharing one link in the chat box. Now it's being copied. So teachers, please share this link with all the students. So at least they will, this is a school innovation marathon link, and at least they will explore by themselves. Received this link. So if anyone want to register parallelly, they can, and you can. Okay. I'm sharing on my screen. School innovation marathon. Sure. Local, just let me know the school this platform is visible, and Yeah, it's getting loaded. Just let me know once it's loaded. Yeah, it's visible. Okay. So teacher, I request you also, please, you can open this link on your phone, on your laptop. So I'll guide you parallelly.
All done? So shall we start? Can you just send emoji of thumbs up? Sir, I have already registered. Okay, thank you, ma'am. So, I'll in this topic, I'll be covering two, three things. The one is about SIM, and second is there are some teachers, those who are new. There are some teachers, those who already know. So I'll go in detail from the basic. So as you can see on my screen, School Innovation Marathon, it's a national level competition, if I say. ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम एटीएल बट फ्रॉम कम्युनिटी स्टूडेंट्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट. मतलब आपके स्कूल के आसपास जो स्कूल्स हैं जिनके पास एटीएल ऐप नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. द स्टूडेंट दोज हु आर नियर टू यू एंड दे डजंट हैव द एटीएल ऐप, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस national level competition. So we'll brief you one by one for each function. The first is register and login. So if you are new, you have to register, and if you already have the account, you have to log in. आपका अगर अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बन गया है तो लॉग इन करना है अपने इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट अस, SIM is India largest school innovation challenge, jointly organized by MOE, Ministry of Education this time, and ATL Innovation Mission, Niti Aayog. Right. So now, if you want to explore more, you can watch the video from here. But I'll give you some more based general ideas. So here, if you can see, these are some highlights of School Innovation Marathon. So here we can say more than lakhs of innovations has been, uh, uh, there in the last previous marathon. Internship opportunities are there with SIP program, Student Innovator Program. Mentorship programs are also there in this marathon. Then present certificates. So we'll go in detail. Here is the roadmap of the marathon. So roadmap is basically you will come to know that okay, and the registration started in the month of July 29, means 29th of July का इनका स्कूल इनोवेशन मैराथन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 29th of July से. उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेज था लर्निंग जर्नी, मतलब जुलाई से लेके अक्टूबर तक स्टूडेंट्स इस पोर्टल के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट देयर कोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल. What they generally do, they have to register on this portal through the teacher, and then they can complete their courses by watching the video. Okay, बच्चे अपना वीडियो देख देख के कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अक्टूबर तक, साथ में अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं. Then third step is idea submission. They have to submit the idea, and the deadline is 30th of November. 30 नवंबर डेडलाइन है, लास्ट डेट है के लिए. और जो विनर्स हैं उनका जो अनाउंसमेंट होगा वो जनवरी में अनाउंसमेंट होगा, और वो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो हमारे SIP और SEP प्रोग्राम के पार्ट होंगे. मतलब जो टॉप 1000 बच्चे होंगे, टॉप 500 बच्चे होंगे, वो हमारे स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, जहाँ पे उनको एक स्पेशल अलग से कह सकते हैं काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हमारी पूरी रोड मैप है, पूरी जर्नी है. अब इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जानेंगे. तो ये टीचर्स इस बार का थीम है, SIM का थीम है. कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता कि हम क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, तो यहाँ पे आप आकर के देख सकते हैं कि थीम से हम क्या क्या देख रहे हैं. जैसे मैं बात करता हूँ इस ईयर की थीम की, लाइफस्टाइल. ठीक है, तो ये थीम्स के नेम है, और इसके अंदर जो फोकस एरिया है, मतलब जो सॉल्यूशंस हमें बनाने हैं, इन प्रॉब्लम्स के अराउंड बनाने हैं जो हमारे फोकस अंदर एरिया के अंदर दिए. सो वी हैव टू डेवलप द सॉल्यूशंस which to keeping in mind the areas. So if I say future ready skills, local community problems, so these are the problems, right?
any other problem that does not. So this is the future health and wellness problem. So if I talks about health and wellness, these are the focus areas: device for fitness and preventive health, then mental health support, assistive for technical things for the specially able people. Then if I say about women and child safe development, these are the focus areas: menstruation health and hygiene solution, early learning and educational tools, सेफ्टी एंड सपोर्ट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन. सो टीचर्स, मैं ये बोल रहा था कि इसमें जितने भी टॉपिक्स, जितने भी थीम्स हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने प्रॉब्लम्स को यहाँ डिफाइन किया हुआ है. नाउ हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि इन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह के हम बना सकते हैं. तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, दैट्स फाइन. अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको आपसे रिलेट नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे लोकल कम्युनिटी प्रॉब्लम ओपन इनोवेशन में आप सबमिट कर सकते हैं. मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इसको ओपन इनोवेशन के अंदर सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वाटर, लाइफस्टाइल, मैंने आपको बताया. इन्हीं के अराउंड हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर. अब आप इसमें टेक्निकल चीजों का भी यूज कर सकते हैं. जैसे आजकल हमारा इतने एडवांस हो गया है, एआई आ गया है, तो आप इनकी मदद से भी, अगर आपको और इसको डिटेल में जानना है, तो आप एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी या जेमिनी की हेल्प से आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, वो आपको पर्सनल असिस्ट करेगा. और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स. तो यहाँ पे कुछ प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं. फंडिंग्स के इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप टॉप उसमें आते हैं. सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, टॉप 20 टीम्स ईच स्टेट वाइज मिलेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाइज, रूरल एरिया वाइज टॉप 10-20 teams will get a certificate. Mentorship and patenting also is there, right? Special recognitions also there. Then we move down. So this is the stats. This is a dashboard till India, like engagement and impact SIM 24-26 in India till now. These are the impact right now. So these numbers are, इंक्रीजिंग सिम लास्ट ईयर स्टेट्स 2024 एंड 25. तो ये आपको पूरा स्टैटिक्स बता रहा है. आपको लाइव चाहिए तो आप यहाँ से लाइव भी चेक कर सकते हैं. दिस इज द लास्ट ईयर 54,415 schools participated with around this number of teachers. 1,39,004 teachers with 19 lakh students participated, teams participated, right? Itne idea. So these are the statics. And now if you want to see this year, click on this time. It shows you your live numbers right now. Right now, these are the numbers. Okay, and this will increase on a daily basis. So these are some videos for your reference. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है SIM के अंदर, तो यहाँ कुछ वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, जो आपको मदद करेंगी आपको उसको लॉग इन करने में. अगर आपको आइडिया कैसे सबमिट करना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं. पासवर्ड भूल गए, चेंज करना है, तो there's a video of on how to create teams. There's a video on teachers dashboard, teacher login, teacher registration. So they have shared all the video formats. Now there are some PDF books also inside the portal that you can also check. So these are the partners, those who are working for SIM, right? And there are some testimonials. So this is all about website. Now, one more thing for you. If you have some questions, which is general question, you can see the answer over here. What is School Innovation Marathon? What are the rewards for the top teams? Who can provide support to the student teams? Will all participant student receive a certificate? So these are some general questions that you can check. So यहाँ पे कुछ general question है जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्कूल इनोवेशन मैराथन से. तो सबसे पहले जब आप रजिस्टर करते हैं, व्हेन यू रजिस्टर, सो देयर इज अ ऑप्शन. You have to fill some basic details. Your dice code. First, you have to enter your dice code, agree, and then proceed. And if you already have the ID, you already have created ID. अगर आपने ID अपना पहले से ही बना के रखा है, तो आपको यहाँ पे करना है साइन इन. ठीक है. Let me open one account. तो इफ यू वांट पैरेलली यू कैन ऑल्सो ट्राई. आप भी इस पे अपना स्कूल का यूडाइस कोड डाल के अभी आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूँ. और इसके बाद आप अपनी टीम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कोर्स कंप्लीट करेंगे. कोर्स
ओनली फॉर टीचर्स के लिए नहीं है, कोर्स बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। आप सभी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो देख के। तो मैं करूंगा साइन इन। तो साइन इन करने के लिए मैं यहाँ से let me- this, yeah, so I'm registering as a student because अगर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, so it can be a teacher, it can be a student, but when you are new, आप पहली बार कर रहे हैं, you have to register as a teacher and then create IDs for the students, then student can register from here। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टीचर की आईडी से करना है। तो मैं यहाँ पे I'll write let me set your ID let me try to open। Okay, it's showing me invalid। Okay, let me just give me a moment। मैं इसे एक बार open कर देता हूँ and then I'll come। So this is oh, okay, I have used double। ठीक है, सो मैं आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। आई हैव लॉग्ड इन। मीनवाइल टीचर्स, अगर आप लॉग इन कर चुके हैं, जस्ट शो मी अ हैंड्स अप अगर आप पैरेलली लॉग इन कर रहे हैं। इट विल बी ग्रेट फॉर मी दैट आई एम हेल्पिंग यू ओवर हियर एंड वी आर डूइंग पैरेलली। सो ये एक्चुअली अकाउंट है हमारे ही एक टीचर का, शैलेंद्र सर है यहाँ पे। तो उनके साथ, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एज अ टीचर बट आई एम जस्ट शोइंग यू अ डेमो। So here is the portal, and I hope you also have the access of this portal. If no, not the access, but is that screen on? I'm not able to see. Gopal, just let me know once my screen is again visible. I'm sharing my screen again. Yeah. Share. I think now it's visible. It's loading, or it's visible. Now it's visible now. Okay. Okay. So teachers, this is the portal we have logged in. Now what need to understand these things. The first is the dashboard. So this is your dashboard where you will understand about the complete background, what exactly going on. For example, pre-survey is done, then you will move. It's a kind of uh, uh, checklist. Okay, if pre-survey is done, okay. Next, move to team creation, done. Students enrollment, done. Course completed, done. Idea approved or not approved, not approved. So we stuck over here. Then post survey and then certificate. So you will get a certificate. Your students will get a certificate. Now here is the link for demo. If you want to see the demo, click on it and they will show you a demo on how to build this one. So I do not want to watch because if I know, but if you want, you can watch it from here and you can share with someone else also. Okay, so now first already I have done the survey. I have completed the survey. That's why showing me complete. I have created my team. Now let's go down here. 100% teacher scores. How many teams I have created? One. How many students I have enrolled? Two. Idea I have not submitted. That means the teacher whose ID is this, he has not submitted the idea.
Now, if you want to know, when you log in, na, it will ask you to complete the survey. Then when you go down, it will ask, आपसे पूछेगा how to you want to create teams. Click on add more, and you can add the teams also. So now right now we have two students. I want to add a team. Here's an option for adding team and students. आप यहाँ पे आके team का नाम, their email address, their full name, if any disability is there, class, age, gender, student 2 ka name, student 3 ka name. Now, teacher, one thing this time is changed. Now, 5 students can participate. I think earlier minimum there's a limit, 2 minimum, maximum 3. But now this time 5 students can participate in one team. मतलब एक टीम में 5 बच्चे, 5 हो सकते हैं, मिनिमम 2, एटलीस्ट मैक्सिमम 5. और आप इनकी डिटेल्स से फिल कीजिए. जैसे आप फिल करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट टीम, वंस यू फिल द डिटेल, व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट टीम, it will form one team, and they will get a unique ID and password, right? And from that ID password they can go back and log in, and then they can complete the course. And so this is how they can, you can create a team for the students. Now, teacher course, there's an option, teacher course. You have to complete the course by watching. Pre-service still pending, but you can also complete. Resources, here's the reference PDF. Then support, right? Let's move to this one, teams. If I open, I can see this is one team, but if I register multiple teams, I can see all the names over here. Okay, now resources, already these are some PDF. You can use this workbook, or you can watch the videos. There's a workbook, SIM rated workbooks are there that will help you. Then post survey, it's not completed yet. And badges, yes, if you complete you will get these kind of badges, right? Enables, after creating 10 teams, you will get this badge. After when you create 5 teams, जब आप 5 टीम बनाएंगे, आपको ये बैच मिलेगा, 10 पे ये मिलेगा, 3 बैच के लिए. तो इस तरह के आपको ये चीजें मिलेंगी. साथ में आप अपने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कि मेरे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने कितना अभी तक कोर्स कंप्लीट किया है. ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं. आपको वो भी इजीली यहाँ पे आएगा. जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन, choose the team member, which team you want to select, and you can see the progress also. Rohan has completed his lesson till now 6%. Shailendra not started. Ideas, abhi tak he has not submitted. Survey is not submitted. Course certificate they have not received. So this is, you can track your students' activities also from here. So teachers आप अपने students की activities track कर सकते हैं by selecting the teams from here. Okay, so this is all about that as a teacher portal. Now I'll be coming to the student portal also, right? So this is easy, not such a big task. Now I'm just logging out, and I'm registering as a student, because when I'm creating account, वहाँ पे student का ID and password वो automatically जनरेट करता है, और उसकी हेल्प से आप अपने स्टूडेंट्स को टीम वाइज उनका आईडी पासवर्ड आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सके. नाउ आई एम रजिस्टरिंग here. 7 1. Let me try to log in as a student. So now I have logged in as a student. So there are 2 students. I think you have seen their names on my teacher portal, Rohan and Shalendra. Now students have to complete their courses from here. So log in as a student. Now you can see over when I have logged in as a student. These are the pre-survey I've completed, course the student has not completed, and it shows the percentage also, how much percentage, how much quizzes have been passed, how many videos out of 24, how many videos I have watched, how many badges I have received, right? So when they complete the survey, when they complete that, then they can submit their ideas, and then they will get a certificate. So this is the way. Now they can also access these things from here also. Course. So I'll show you the course. In the course, first inspiration, 4 videos are there, 2 videos. So by videos, it is divided. So teachers यहाँ पे videos हैं, बच्चों को videos अपने पूरी complete करनी है courses के through.
इन कोर्स में वो कुछ ना कुछ चीजें सीखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे इनोवेशन फॉर बेटर लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्विजेस। तो उनको यहाँ से आइडियाज भी मिलते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो उनको वीडियोस देखने हैं, अपने कोर्स कंप्लीट करने हैं। ओके, चलिए। So, so I'm on this note, I'm closing this ATL marathon part. I hope now you understand about the marathon, how to submit the projects, how to register students, and you will also get an idea if your students get participate in this, the level of opportunities they will get. I think some of the teachers already shared, and I'm going to show you some PDF. One PDF is with me. I'm just going to show कि जो हमारे students हैं, जब वो when they participate in such things, what type of achievement or what type of you know just give me a moment. Let me share my screen for SIP brochure and SIP handbook. Okay. Yes, so I'm sharing one SIP brochure. So you will also get an idea कि जब बच्चे हमारे टॉप मैराथन में सिलेक्ट हो जाते हैं तो किस लेवल पे वो काम करते हैं, मतलब आगे जा करके। Hopefully my screen is visible, I guess, right? This ATL SIP Student Innovator Program. Yes, yes, Right, yes. yes. So teachers, this is the there's a booklet, and you will get an idea of why ATL SIP, why it is important, explore, tinker, innovate, and right. So there's a SIP journey. There's a SIP journey. I'll just look at it a little bit और just participate करते हैं, और उसके बाद जब वो टॉप में सिलेक्ट हो जाता है, कई स्कूल्स को या कई बच्चों को नहीं पता होता, जो जो एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं, राइट, द वन हु एक्चुअली सिलेक्टेड, दे नो what is happening, right? So just give me time. I'm just adjusting my screen. Oh. Yeah. So if you can see the ATL SIP prototype journey, the first is applications invited. AIM invites online applications for ATL Marathon. And then in the round one, evaluation, top 200 teams or top 1,000 teams. It can be any number. It depends on the submissions, right? Then the top 200 teams announced, then top 100 teams announced. And then in the ATL Marathon, top innovator announced, top India's top and innovations, and then SIP launched. So this is for the selective people. Let's suppose if lakhs of people, students participating, so around 30 teams or 30 students participate in this SIP program. So this is how, this is something important for students. Can you see on my screen, there are some actual photos of the students, those who worked with the people, those who are the industrial people, those who are on ground, right? So this is how they got a chance to work on the actual product, right? So there are a lot of series of sessions went like on marketing, finance, strategy, how to sell your product. तो ये चीजें उनको सिखाई जाती हैं जब वो एक टॉप 30 या टॉप 50 या टॉप 100 में जब वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इंडस्ट्री जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर प्रोटोटाइप इनटू अ प्रोडक्ट, राइट? So this is a booklet. It's available on IMS portal, and if you want, you can also have this one. So awards. Let's see. I think most of you are part of this one, and but I'm just sharing just for info. And we have one more PDF. Gokul, can you see my second PDF SIP handbook Beyond Tinkers? Or should I share my screen again? Beyond Tinkering. Yeah, it's visible. Okay, fine. So this is the second handbook, teachers, and this is Beyond Tinkering for ATL SIM students. So let me go down. It's a long book, but I'm just showing you just for reference, just to motivate them, to motivate the students, why this is important, what exactly you are going to at the end of this marathon. They ask why a marathon, what is the scope. So this is why I'm showing you this thing. They also get a chance for such. Let me. So there's a complete book is there. So those students, those who actually worked, they got a chance to meet such honorable people.
the government of India's ministry, they present their models, so this is how you can also motivate your students in a regular class for ATL marathon. These are some students, those who develop the prototype. Now they are actually working on the product part. Right. I'm not going to describe. I'm not going to take much time on this one, but just showing for a reference. Right. So this is all about school innovation marathon. Then we have half an hour. I think it's 1:30. Now I'll be going to take a session on how to shoot videos for ATL Marathon, because these all topics, the first is design thinking, then ATL Marathon, then how to shoot a video. These all are interlinked to each other. And I think today you got a much clear idea for innovation. Now let me share my screen for how to shoot a video. Uh, Meanwhile, Gokul, I request you share the uh, joining attendance form with the teachers. I'm just pulling out ATL Marathon presentation. Sorry, Neeraj, I got a voice break now. Okay. I'm saying I'm pulling out the presentation. Meanwhile, you share the for link with the teachers. Those who have just joined right now, they can mark their attendance. Yeah, sure. Also, teachers, one thing I missed, but you can on SIM. If you want, there's a book that will help you, and you can share with your students. Uh, this one. I hope this is visible. Yes. So you can share this book. Basically, it's a website user guide, and here an AIM has mentioned each and everything in detail. So this will guide you in your journey of marathon. सो टीचर आपको ये गाइड ये बहुत हेल्प करेगी, ये वर्कबुक जहाँ पे सब इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ में दिया हुआ है। टीचर स्कूल रजिस्टर कैसे करें, स्टूडेंट का कैसे एनरोलमेंट करें, शेयर कंटेंट कैसे करें, स्टूडेंट्स का लॉगिन कैसे करें, कोर्स कंप्लीशन। तो यहाँ पे एक एक करके आप इसको पढ़ के स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं अच्छे से। फोटो भी दिया हुआ है और किस तरह से आईडी बनाना है, ओटीपी कहाँ आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसकी हेल्प से भी आप अपने मैराथन के लिए आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टीचर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर गिवन with the photos also, and this will definitely going to help you for marathon. So this PDF is already available on Google on AIMS portal, so you can search and you can check from there. Now I am moving to our next topic, which is very interesting topic, and I think I have last year I took the session on AIMS YouTube channel for how to take a video, how to shoot a video for the ATL marathon, right? So let me share my screen fully. Right. Yes. So, can we start? That's visible. So, teachers, just hand raised. I just want to know how many we are active right now. Quick hand raised, and then we'll start the session. I just need your thumbs up that you're ready to start. I need a thumbs up. I just want to know how many are actually watching and how many actually submitting the assignments or checking the result to exam papers. So quick hand raised. I want to see that all are active over here. No one is doing a parallel work. Because something if I want that I also need that कि at least हमारे स्कूल से बहुत सारे प्रोजेक्ट इस बार आए
एंड अगर कहीं कोई सिलेक्ट हो गया टॉप लेवल पे डेफिनेटली मुझे याद जरूर कीजिएगा. नो नो नो, इट्स स्टूडेंट्स का व्हाट वी से, स्टूडेंट का हार्ड वर्क. So I'm just here to motivate, to guide. Similarly, you all also doing. We are just passing the information. Somehow I'm also got this information from somewhere. Boy, that's the same I'm passing with you. So yeah, great. I think a lot of teachers are now active. It's lunchtime, I know, but thank you so much for your activeness. And now this is one of the important session that I took last year also on behalf of AIM on YouTube channel. And मेरा शायद वो वीडियो वहां पे अभी भी होगा. एंड अगेन आई एम टेकिंग द सेशन राइट नाउ, हाउ टू शूट अ वीडियो. तो सबसे पहले पहले हम ये जानते हैं कि वीडियो जो हम शूट करते हैं, when we are shooting a video, why it is important, why it is necessary. Because something what happens, project we are designing, this is of extraordinary, this is of upper class, no copy, it's a unique. हमको लगता है कि it's a unique one, कोई copy नहीं है. It's a it's a new something I want to patent. But the problem is I submit my prototype, I may submit my product for marathon. I upload the videos, students uploaded the videos, right? And then at the when the result announced, then we come to know, oh, my project is not there. Why? Because I don't know. Might be this the auditor or the person, the judge who is behind the form marathon. He has not checked our project properly. So there can be any reason X Y D reason for not selection. Might be the video format is not good. Might be you have not submitted the proper documents related things with them. Because when you submit the video, there's an option for submitting the thesis, submit the written format. Might be we have not submitted it properly. Might be we are not able to explain the main part which is required. So there can be any reason. It's not like कि मेरा project नहीं select हुआ तो क्यों नहीं हुआ. कुछ भी रीजन हो सकता है, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि वीडियो शूट के बारे में हम प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करते, जिससे जो कह सकते हैं जज या फिर जो हमारे पीछे जो हमारे प्रोजेक्ट को देख के उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, शायद उनको उस नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है. हमने प्रोजेक्ट बनाया है वाटर से एयर में कन्वर्ट करना है, हमने प्रोजेक्ट को सब समझा दिया, बट उसका जो मेन फंक्शन था वो नहीं बताया, या उसको वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए, या उसको हम नहीं समझा पाए, या फिर जो बच्चा जिस वे में बोल रहा है, द वे द स्टूडेंट इज एक्सप्लेनिंग द prototype, voice is very low. Some sound is coming from the background. There's a darkness, in the video. Some distortion is there. So these are the things that we have to keep in mind when we are recording a video. Okay. So let's move to the topic. So this is the first, how to create videos for your ATL marathon. Right. Now, I think this everyone is aware of this photo. This is the frame of a camera while recording a video. You have to always make sure when you are recording a video, your video settings should be in 4K or 2K, or no, it should be in high definition, right? Now, yeah. So who will watch your project videos whenever you are recording a video? See, teachers, what happens, it's not like ki always you have a hardware. Might be you have a software also, you have a software project, है ना. आपके हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है. तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जब आप प्रोजेक्ट का वीडियो बना रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट देख कौन रहा है, हु इज वॉचिंग योर प्रोजेक्ट वीडियो, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड for whom you are shooting this video. Then second is, these are some points which you need to keep in mind while shooting the ATL Marathon video. The first is introduction of all the team members and your school name. Whenever you are recording a video, students should call out their names, their school name, then what type of problem they are solving. When they are when you're recording the video, they have to mention what problem they are solving. Then you need to record a video from 360-degree view. 360-degree view means, if let's suppose this is my product, if this is my project, oh, it's not visible. Yeah. So let's suppose this is my project. I have to record the video from all the angles, left, right, up, down, east, west, north, south. From all the directions, I have to record the video. Then
the functionalities and some features of your project, how it actually working. These features you have to mention. Then on ground testing, you have to show that real working, the testing part of your project in that video. Then the role of each team member. What is the role of, let's suppose there are three people, three students. What is the role of each person in this project? They have to call out properly, right? Then the next is where's my yeah. So you have to call out each uh, eh, a second. Neeraj sir, you are on mute. Okay, sorry. I think someone has muted me. No, I'm the host. I'm sorry. So uh, involve the community people. So I hope you have heard this one, role of each team member. Each team member have to tell their role, what they have designed. I have designed hardware part. I have designed software part. I have designed the hard art and craft. Then involvement of community. For example, if you are developing the product for some community or some local vendors, involve those people also in your video. So it should looks like कि हाँ आपने एक्चुअली में किसी ये जो प्रोडक्ट है अपने लैब में बैठ के नहीं बनाया, ये आपने किसी ग्राउंड में जाके किसी टी लोकल जो वेंडर्स होते हैं, लेट्स सपोज आप किसी रिक्शा पर्सन के लिए बनाना चाहते हैं, आप फार्मर्स के लिए बनाना चाहते हैं, आप किसी ऐसे कम्युनिटी के लिए बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उनको भी अपनी वीडियो में इन्वॉल्व कर दो. इट शुड बी लाइक अ स्टोरी. आप पूरा एक कहानी जैसा आपने देखा होगा कई बार एड्स में, है ना, तो इट शुड बी लुक्स नेचुरल. ऐसे लैब में वीडियो शूट कर और अपलोड कर दिया नहीं. तो थिंक लाइक अ वीडियोग्राफिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं मूवीज बनाते हैं ना, उनकी तरह पूरा एक एक्चुअल स्टोरी निकल के आनी चाहिए वहां से. तो जब भी आप वीडियो बनाए तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि हाँ हम ये कुछ फीचर्स है जो हमें ये जरूर अपने वीडियो में डालने हैं. नाउ देयर आर सम स्टेप्स. आई नो टीचर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एक अच्छे गुड फोटोग्राफर्स हैं एंड दे नो फोटोज कैसे लेते हैं. बट दिस इज फॉर एवरीवन जनरल, कि जब भी आप मैराथन का वीडियो शूट कर रहे हैं, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में अपने मोबाइल को पकड़ के वीडियो बनाए, नॉट इन दिस वे. द डिफरेंस इज वर्टिकल, जब हम फोन को हम हैंडल करते हैं तो इससे हम रील्स बनाते हैं. आपने मोबाइल पे देखा होगा जो रील्स आते हैं इस फॉर्मेट में, तो जनरली हम रील्स बनाते हैं. बट 16:4 इस पोजीशन पे क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे बड़े टीवी पे आप मॉनिटर करके आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे व्यू में आप दिखा सकते हैं. तो always try to handle camera like this, not for this, because this is the real kind of videos generate होते हैं इस वे में. देन लेंसेज के बारे में हम बात करते हैं कि किस टाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं. हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज या दिस वन, कीप इट स्मूथ एंड स्टेडी. आप जब वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा शेक कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वीडियो इतना डिस्टॉर्शन हो जाता है या शेकी व्यूज आते हैं. तो कीप इट स्टैंडी. आप गिम्बल का यूज कर सकते हैं, आपको एक स्टेबल ट्राइपॉड का यूज कर सकते हैं वीडियो शूट करते हुए. पहले उसको होल्ड करें, पॉज करें, अपने कैमरा को स्टेबल करें ना, देन उसको प्ले करें. तो यूज अ स्टेडी मोड, not like a shaky, right? Then I think yeah, COVID mein you have seen most of the teachers have seen this type of jugaad we says for online teaching way when we moved to the online mode. So on that time we are not ready. हमारे पास कोई ऐसा ट्राइपॉड या हमारे पास कोई ऐसा गिम्बल नहीं था कि हम लोग तुरंत एकदम से हम ऑनलाइन मोड पे आ जाए. तो एवरीवन tried their own way. Like the lady, she used a chair, some thread, not the thread, but a piece of cloth, and how she managed the mobile phone so that as
a steady video record, और हिले नहीं शेक ना हो, इसलिए उन्होंने उसके नीचे एक चेयर भी लगा दिया है ताकि वो मतलब स्विंग ना करे कैमरा, राइट? दिस इज हाउ, इफ यू आर रिकॉर्डिंग, मेक श्योर not to do this, but you have some alternate things we have in the market. We have